Hello everyone and पिला माने very good evening all and welcome all to Odia 24/7 Odia YouTube channel and this is Satya sir Pedagogy समस्त को पिला माने welcome करछि आडा ओडिया को आज आपण मन पय स्पेशल सेशन SSB TGT Pedagogy Marathon तो आज हम सेशन आपनकर माराथन सेशन हमें आज चेष्टा करबा बहुत सारा MCQ करिया पय ठीक अच्छे तो जो माने भी सेशन रे अछंती समस्त टिके सेशन को जोरदार लाइक एंड शेयर कर दियंतु देन विल स्टार्ट आवर कार्यक्रम स्टार्ट करबा आज माराथन सेशन संध्या 7 रु 9 रेडी समस्त रेडी पिला माने नमस्कार समस्त को पिला माने ढेर सारा गुड इवनिंग ऑल ऑफ रेडी पिला माने रेडी तो रेडी पड़ी चला आपण मन आज छुट्टी मो तरफ थर्ड ऑफ द डे थर्ड ऑफ द नाइट कहि परबा एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी एंड बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी ठीक एटा मन रखिबे एवरीथिंग इज बिजी व्हेन यू आर एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी सब जिंस सहज हुए जतबे तमे निजे को सेतरे व्यस्त रख निजे को सेतरे डीप को निया and nothing is easy when you are lazy so mind it ta मन रखिबा दरकार कोनो जिंस केबे हला हम पकु सहज रे आसी जायनी जिंस पय हमको लागिया पड़े तर हमको परिश्रम करिया पड़े रेडी चलो तो स्टार्ट करिबा मैराथन रो आज रो फर्स्ट क्वेश्चन ओके फर्स्ट क्वेश्चन नो टाइमर फाइमर किसी आज ना फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानक पई which assessment method provides a snapshot of a student's knowledge and skills at a specific point of time? Which assessment method provides a snapshot of students' knowledge and skills at a specific point of time? Snap assessment, summative assessment, formative assessment, ongoing assessment. कौन कहबा हमें at a specific point of time सर जोटा रेगुलर हुए सब बेले हुए सेटा फॉर्मेटिव जोटा रेगुलर हुए सब बेले हुए सेटा फॉर्मेटिव बट पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम रे जोटा हुए ताको हमें समेटिव बोली को एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम माने एट द एंड ऑफ द ईयर एट द एंड ऑफ द टर्म एट द एंड ऑफ द यूनिट तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम हेले ताको तो समेटिव कहबा प्रथम क्वेश्चन भूल करतछ आंसर इज बी समेटिव एनी टाइम कहनी एट ए स्पेसिफिक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम फॉर्मेटिव होची एनी टाइम समेटिव होची एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम डन yes ओवरऑली हमें अराउंड 150 क्वेश्चन डिस्कशन करबा जो माने भी सेशन रे अच्छा पिला माने समस्ते सेशन को गोटे लाइक एंड शेयर कर दियंतु लास्ट पर्यंत रहंतु निजे चेक करंतु जे आपनकर केतरा ठीक होची केतरा भूल होची ठीक अछि सब जिंस क्वेश्चन रो आंसर बुझिबा काहे केटा आंसर होची सेटा मध्ये हमें एनालिसिस करबा ओके रेडी डन चलो मेक इट 200 लाइक 140 हेलानी शेयर कर देले पिला 200 हिजबे चल क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एप्टीट्यूड टेस्ट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एप्टीट्यूड टेस्ट
गोटे एप्टीट्यूड टेस्ट रो प्राइमरी पर्पस कौन टू मेजर ए पर्सन्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग और एक्वायरिंग स्पेसिफिक स्किल गोटे डी व्हिच टाइम को ना कौन को चलो ongoing एनी टाइम सेम ऑप्शन फॉर्मेटिव ongoing सेम ऑप्शन to measure the current level of knowledge and skills, to assess a person personality and interest, to evaluate job performance. सर पर्सनालिटी और इंटरेस्ट में हमें करूँ एप्टीट्यूड टेस्ट कौन करूँ हमें एप्टीट्यूड टेस्ट गोटे एग्जांपल कौन हो पारे जमती आपनकर टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट करा होचे गोटे टीचर हवा पई तम भितर इनहेरिटेड टीचिंग क्वालिटी अच्छी ना नहीं तुम जान हाउ टू मैनेज द क्लास तुम जान कि हाउ टू ऑर्गेनाइज द क्लास हाउ टू गो फॉर स्पेसिफिक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप टू मेजर ए पर्सन पोटेंशियल फॉर लर्निंग और एक्वायरिंग स्पेसिफिक स्किल टू मेजर द करेंट लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल करेंट लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल हम ना जॉब परफॉर्मेंस हो What will the right answer of aptitude test? Answer is option A, to measure a person's potential for learning or acquiring specific skill. Sir, current level of knowledge को जानिया पई आपण summative assessment apply करि परिबे. Aptitude test बेसिकली आम पिलार स्पेसिफिक स्किल पोटेंशियल जमी टीचर रो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट करा जाए तार टीचिंग पोटेंशियल मेजर करा जाए सो एटा आंसर ऑप्शन ए इज बेटर ऑप्शन डी नुहे क्वेश्चन नंबर 3 एन असेसमेंट दैट मेजर्स व्हाट इज सपोज टू मेजर इज सेड टू हैव डैश सहज क्वेश्चन आपण मन पई कहि दे परियो जल्दी जल्दी An assessment that measures what it is supposed to measure is said to have dash. जो उद्देश्य आपण क्वेश्चन बनै छन जदि आपण क्वेश्चन से उद्देश्य पूर्ण करि पारुछि ताले आपण ताको कोन कहिबे we can call that validity. Yes. Reliability होछि consistency, objectivity होछि scoring रे जेमति biasness न आसो scoring रे जेमति biasness न आसो consistency reliability same term. Consistency or reliability same term. So answer is validity. Paravati question number 4. In assessment, objectivity refers to what? Assessment रे हमें objectivity क्या कहबा? The variety of assessment methods used, the absence of bias in scoring and interpretation, the relevance of assessment content, the accuracy of assessment score. The variety of assessment methods used आकु तामे कहू जे different tools and techniques एटा ऑब्जेक्टिविटी सहित संपर्कित किछि नाही absence of biasness scoring रे biasness रहिबो नाही interpretation रे biasness रहिबो नाही लेखा बदलिबो नाही ऑब्जेक्टिविटी क्वेश्चन हमें साको कहबा जहार स्पेसिफिक आंसर गोटे उत्तर जेतु उत्तर गोटे मार्किंग भी गोटे रहिबो मार्किंग रे एपट सेपट हबो नाही मार्किंग रे एपट सेपट हबो नाही ठीक अछि द रिलेवेंस ऑफ असेसमेंट कंटेंट से रिलेवेंस टाको हमें कहू वैलिडिटी द रिलेवेंस ऑफ असेसमेंट कंटेंट इज कॉल्ड एज वैलिडिटी द एक्यूरेसी ऑफ असेसमेंट स्कोर स्पेसिफिक टर्म किछ कहि परियोनी बट आंसर इज बी बी इज द राइट आंसर ओके एजरो सेशन रे आपनकर असेसमेंट और लर्निंग दीटा पार्ट असेसमेंट इवैल्यूएशन और लर्निंग दीटा को पार्ट रो क्वेश्चन अछि assessment evaluation test construction subject characteristic boot test fundamental of assessment सेमती learning रो मध्य different chapter रो क्वेश्चन अछि ठीक अछि सेशन शेष पर्यंत रहंतु डेफिनेटली भलो भलो क्वेश्चन अछि खराब क्वेश्चन नाही चल which assessment approach focuses on the process and development of learning rather than just final product which assessment approach focuses on the process and development of learning rather than just final product फाइनल प्रोडक्ट उपरे गुरुत्व न दे कि प्रोसेस उपरे गुरुत्व दिए
O assessment process or developmental, which assessment is focuses on learning process and developmental. Process oriented assessment कहबा product तो कदा भी norm reference test रे हमरो ranking दिया जाए और एटा product self or process, it is called as process oriented assessment. It is process oriented assessment. Process oriented assessment can be otherwise called as formative assessment. Process oriented assessment can be otherwise called as formative assessment. Done? Question number 6. An assessment that measures a student's overall understanding of a subject is known as dash. Diagnostic assessment, continuous assessment, comprehensive assessment, peer assessment. An assessment that measures a student's overall understanding of a subject is known as dash. Diagnostic, continuous, comprehensive, peer. Overall understanding कही overall understanding माने holistic understanding. Holistic understanding is otherwise called as comprehensive. ako मैं कौन कहूँ comprehensive को, it is otherwise called as comprehensive assessment. Yes, very good, बहुत बढ़िया छुआ, भयंकर छुआ सब आंसर ठीक ठाक दौरान. very good, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच. चल क्वेश्चन नंबर 7 आपण मानक पाई आपण मानक स्क्रीन रे आम तरफ. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन इन असेसमेंट. असेसमेंट रे आमे जो ओपन एंडेड क्वेश्चन दउचे तार एडवांटेज कोन? इजियर एंड क्विकर टू ग्रेड, अलाउ फॉर ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए स्टूडेंट्स नॉलेज, लिमिट्स क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज्ड रेस्पॉन्स. आमे जो ओपन एंडेड क्वेश्चन दउचे असेसमेंट रे, ओपन एंडेड क्वेश्चन माने जहार मल्टीपल आंसर थाए, जो थे पिला रो डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रमोट हुए, जो थे पिला रो क्रिएटिविटी प्रमोट हुए, पिला निज को निज वे रे एक्सप्रेस करे, डीप को जाए, डिटेल को जाए. ओपन एंडेड क्वेश्चन इजियर एंड क्विकर टू ग्रेड. खाता देखिबा सहज न, खाता देखिबा पई एक्सपर्ट दरकार, खाता देखिबा पई एक्सपर्ट दरकार. यस, it allows for a deeper understanding of a student's knowledge. Yes, allows for a deeper understanding for student knowledge. हाँ, ओपन एंडेड क्वेश्चन रे पिला डीप को जिबे, डिटेल को जिबे, डीप को जाए कि लिखिबे, इन डेप्थ नॉलेज दरकार, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग दरकार. यस, इट लिमिट द क्रिएटिविटी नहीं, इट प्रमोट्स द क्रिएटिविटी. इट डज नॉट लिमिट द क्रिएटिविटी, इट प्रमोट्स द क्रिएटिविटी. इट प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड रेस्पॉन्स. स्टैंडर्डाइज्ड रेस्पॉन्स में मल्टीपल वेरिएबल रेस्पॉन्स आसी पारे. स्टैंडर्डाइज मैंने गोटे स्पेसिफिक रेस्पॉन्स कहले भूल हम. आंसर बी इज बेटर. यस, क्वेश्चन नंबर 8 आपण मानक स्क्रीन रे आपण मानक पाई. an assessment that measures a student's ability to perform a specific task is known as dash. Performance assessment, portfolio assessment, self assessment, peer assessment. An assessment that measures a student's ability to perform a specific task, particularly gote task upare, particularly gote specific task kariba mention bhi hechi. An assessment that measures students ability to perform performance assessment hi hobo. Portfolio रे हमर पिलार स्टूडेंट रो पॉजिटिव आउटकम गुडा को गोटे फोल्डर रे फाइल करी रखो, पॉजिटिव अचीवमेंट गुडा. सेल्फ असेसमेंट निजे निजे को असेस करियो, पियर असेसमेंट तम सांग तुमको असेस करियो. एटी मेंशन इन क्वेश्चन किछि, क्वेश्चन ओनली परफॉर्म वर्ड मेंशन कराई छि. एटी वर्ड हिंट मिल गेला हमको, वर्ड हिंट भी हमको मिल गेला. आंसर एही हो. क्वेश्चन नंबर 9. इन असेसमेंट फेयरनेस रेफर्स टू व्हाट? इन असेसमेंट फेयरनेस आमे काहा को कहबा? द इम्पार्शियलिटी एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, द कंसिस्टेंसी एंड consistency of assessment result, the variety of assessment methods used, the accuracy of assessment scores.
इन असेसमेंट व्हाट डू यू मीन बाय फेयरनेस फेयरनेस माने कौन आम समस्त को फेयरली ट्रीट करछे कहा प्रति बायस होने कहा प्रति पार्शियल होने तो फेयरनेस ऑब्वियसली हम कहि परबा द इम्पार्शियलिटी एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इम्पार्शियल हवा समस्त को आम समान ट्रीट करिया एटा हबो तो कंसिस्टेंसी ऑफ असेसमेंट रिजल्ट एटा तो आम रिलायबिलिटी कहू जाब द वेराइटी ऑफ असेसमेंट अलग कथा द एक्यूरेसी ऑफ असेसमेंट स्कोर दैट इज डिफरेंट ऑप्शन ए बेटर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10 आपण मानक स्क्रीन रे an assessment that measures a student's ability to recall facts concept or procedure is known as dash understanding assessment application assessment evaluation assessment knowledge assessment what is the right answer an assessment that measures a student's ability to recall facts or concept or procedure to mention sir recall fact गुड़ा को हम सब जगह नॉलेज रे जाए फैक्ट को मन पकेबा फैक्ट गुड़ा को सब बड़ा नॉलेज बेस्ड असेसमेंट फैक्ट इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ नॉलेज बेस्ड असेसमेंट इट अंडरस्टैंडिंग किछ नहीं फैक्ट का मन पकेबा ये जो व्हाट व्हेन हु दीज आर ऑल द फैक्ट्स फैक्ट गुड़ा को जे पार्ट ऑफ नॉलेज बेस्ड असेसमेंट यस आंसर इज डी when you recall the facts is a part of your knowledge okay coming to the question number 11 an assessment that measures a student's ability to analyze synthesize and evaluate information is known as dash lower order thinking assessment higher order thinking assessment comprehensive assessment norm reference assessment an assessment that measures a student's ability to analyze synthesize and evaluate information is known as dash lower order thinking assessment higher order thinking assessment comprehensive assessment norm reference assessment sir analysis synthesis evaluate according to Bloom's taxonomy these are all are called HOTS 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 बुझ पाछो आको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को जाए तो दिस इज आर हायर ऑर्डर थिंकिंग असेसमेंट ऑप्शन इज बी चलो क्वेश्चन नंबर 12 सर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन दीज आर लोअर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन दीज आर हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए चेकलिस्ट इन द असेसमेंट असेसमेंट रे चेकलिस्ट यूज करिवार गोटे एडवांटेज कोन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ चेकलिस्ट हम जनरली चेकलिस्ट यूज करू जेंते आपन को अटेंडेंस रे पडुचे प्रेजेंट और एब्सेंट अटेंडेंस इज ए फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट इंटरव्यू नउचे पिला देखु हम तार सेटिंग अरेंजमेंट ठीक थिला ना नाही आई कांटेक्ट ठीक थिला ना नाही तार पोजीशन ठीक थिला ना नाही एक्सप्रेशन ठीक थिला ना नाही वॉइस ठीक थिला ना नाही ठीक बोल चेकलिस्ट प्रोवाइड्स ए क्विक एंड सिंपल वे टू रिकॉर्ड स्पेसिफिक बिहेवियर स्किल गोटे पिलार स्पेसिफिक बिहेवियर स्किल को सिंपल वे जल्दी जल्दी आम रेकर्ड करें चेकलिस्ट आमको साहाय्य करे कि करे अलाउज फॉर ए डिटेल रिटन रेस्पॉन्स चेकलिस्ट डिटेल रिटन रेस्पॉन्स किछ नहीं डिटेल कहीं लिखो आम आइदर ठीक भूल मारू क्विकली करो सर्वे टाइप सर्वे करने जाइए इकोनॉमिकल सर्वे जनक घर को जाइए सर्वे करने दी चकिया अच्छी ना नहीं तीन चकिया अच्छी ना नहीं गाई अच्छी ना नहीं बलद अच्छे ना नहीं असेसमेंट ए रेकॉर्ड रेंज ऑफ स्किल साइमल्टेनियसली नो एलिमेंट द नीड ऑफ फीडबैक नहीं सेमती कहबो नहीं यू कैन नॉट एलिमेंट द नीड फॉर फीडबैक आंसर ए ही बेटर चेकलिस्ट which type of assessment is conducted during the learning process to monitor the progress and provide feedback इन मझे मझे छोट छोट क्वेश्चन भी सहजा क्वेश्चन रहा दरकार खुशी माहौल बजाय रहिबो मन खुशी रहिबो आगे ही चलिबा ठीक सर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेटिव an assessment that measures a student's ability to apply knowledge and skills to solve problem is known as dash जो असेसमेंट द्वारा पिला माने नॉलेज को अप्लाई करंती स्किल को अप्लाई करंती कौन सी समस्या को समाधान करिया पई ताको हम कोन कहबा नॉलेज असेसमेंट अंडरस्टैंडिंग असेसमेंट एप्लीकेशन असेसमेंट एनालिसिस असेसमेंट लेखा इज सिंपली पूरा वर्ड मेंशन है अप्लाई नॉलेज एंड स्किल
नॉलेज और स्किल को अप्लाई करके हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करिया इज एप्लीकेशन बेस्ड असेसमेंट इट्स एप्लीकेशन यस वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच असेसमेंट अप्रोच इंक्लूड स्टूडेंट्स इवैल्यूएटिंग देयर ओन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस सेल्फ असेसमेंट प्योर असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट इवैल्यूएटिंग देयर ओन लर्निंग मेंशन है निज लर्निंग को निजे असेस करबा निजर परफॉर्मेंस को निजे इवैल्यूएट करबा ओन माने ताको हम सेल्फ असेसमेंट कहि परिबा यस आंसर ऑप्शन ए comment the question number 16 a bell curve grading system is associated with which type of assessment bell curve grading system माने हम तो relative grading बोले कहू प्राय तो relative grading हमें को थ्री यूज करू क्राइटेरिया रे फॉर्मेटिव तो ग्रेडिंग यूज होनी ऑथेंटिक तो रियल लाइफ असेसमेंट एथर ग्रेडिंग होनी ग्रेडिंग आइदर क्राइटेरिया यूज हुए नचेत नाम रे यूज हुए रिलेटिव ग्रेडिंग बेल कर्व ग्रेडिंग इज कॉल्ड एज रिलेटिव ग्रेडिंग आपको रिलेटिव ग्रेडिंग बोली कह जाए बिकज एथरे पिला को रिलेटिव रैंकिंग दिया जाए रिलेटिव रैंक माने कोन 100 मार्किया परीक्षा है जे टॉपर हला से रखिछि 72 ताकू ताकू कह जे रखिछि 100 परसेंटाइल कोन रखिछि 100 परसेंटाइल सेटू परसेंटाइल कैलकुलेशन हो क्राइटेरिया रे कोन था एब्सोल्यूट ग्रेडिंग यूज हुए क्राइटेरिया रे एब्सोल्यूट ग्रेडिंग यूज हुए जो थरे पूरा फिक्स ग्रेडिंग जति परसेंट रखिछि सेति एब्सोल्यूट ग्रेडिंग ताले बेल कर्व ग्रेडिंग बा रिलेटिव ग्रेडिंग यूज हुए नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट रे सो आंसर इज ऑप्शन सी डन क्वेश्चन नंबर 17 इन असेसमेंट क्राइटेरियन वैलिडिटी रेफर्स टू व्हाट असेसमेंट रे क्राइटेरियन वैलिडिटी कहा को कहबा द एक्सटेंट टू व्हिच एन असेसमेंट मेजर्स व्हेन इट इज सपोज्ड टू मेजर द एक्सटेंट टू व्हिच असेसमेंट इज कंसिस्टेंट ओवर टाइम सर कंसिस्टेंट ओवर टाइम कहले हमें ताको रिलायबिलिटी बोली कहू आको रिलायबिलिटी बोली कहू जे ताको एतरे वैलिडिटी संपर्क किछ नाही द एक्सटेंट टू व्हिच असेसमेंट इज consistent across daters ये भी reliability the extent to which assessment predict the future performance sir future performance predict करे माने आको predictive validity बोली कहा जाय आको कोन कहा जाय predictive validity this is called as predictive validity answer A हो the extent to which assessment that measures what it intend to measure what it claim to measure yes comment to the question number 18 which assessment method is most suitable for assessing a student's ability to communicate and articulate ideas effectively which assessment method is most suitable for students to communicate and articulate ideas effectively कोथरे पिला निजर आइडिया को इफेक्टिवली एक्सप्रेस करि पारे कम्युनिकेट करे पारे कम्युनिकेट ता बहुत सर एमसीक्यू रे किछ कम्युनिकेट करि पारेनी फिल इन द ब्लैंक एथरे कम्युनिकेशन कोडी करियो पिला फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स यस नो रे कैन स्टूडेंट्स कम्युनिकेट हिज आइडिया इफेक्टिवली ना एमसीक्यू रे चारटा ऑप्शन देछि आइंद्र गोटे ठीक हो नल नाही ओरल असेसमेंट ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ असेसमेंट ओरल असेसमेंट रे he can communicate and articulate ideas effectively okay answer is option A question number 19 आपण मानक पई आपण मानक स्टूडेंट an assessment that measures a student's ability to plan organize and manage time is called as dash knowledge assessment execute function access assessment understanding assessment application assessment an assessment that measures the student's ability to plan organize and manage ताक हम कोन कहबा when student plan organize and manage something what type of assessment is this called this is called as executive function assessment knowledge कथा किछ पड़िनी understanding application किछ नाही it's not executive function when you are function you have to execute something or plan something yes that plan organize and manage the part of executive function assessment किछि नुआ टर्म एते अछि in assessment cognitive domain refers to the classification of learning objective related to dash intellectual skills and knowledge social and emotional development
physical skill and abilities, ethical and moral values. In assessment, cognitive domain refers to the classification of learning objectives related to dash. Assessment रे cognitive domain कार part. Sir, cognitive domain आम ताको otherwise आपको intellectual domain भी कहा जाए. एटा intellectual skill और knowledge रो part हबो. Social skill, emotional development एटा आपन करो affective domain रो part. Physical skill और abilities एटा आपन करो psychomotor domain रो part. Ethical and moral value ये मध्य affective domain रो part. But intellectual skill and knowledge, this is a part of cognitive domain. This is the part of cognitive domain. Answer is option A. जो मैंने भी आंसर दौरान मो तरफ आपको 2-4 ट्रक धन्यवाद, 6-7 ट्रक धन्यवाद, बड़े आंसर दौरान. थैंक यू सो मच. Which type of assessment is best suited for measuring a student's ability to memorize fact and information? Understanding assessment, application assessment, evaluation assessment, knowledge assessment. कोथरे आमे मेमोराइज करू फैक्ट और इनफॉरमेशन को मन रखिबा मन रखिबा उठी आपन नॉलेज बेस्ड असेसमेंट पार्ट. सो आंसर इज डी, दैट इज नॉलेज असेसमेंट. यस, डन. Question number 22. An assessment that measures a student's ability to analyze and evaluate information is known as dash. Synthesize assessment, application assessment, analyze assessment, understanding assessment. Question number 22. देछि एनालिसिस वर्ड लिखा है पूरा आमे एतले इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करू माने एनालिसिस असेसमेंट. एनालिसिस वर्ड मेंशन है इस क्वेश्चन रे, ताको देखि मते ढाबाडे हो. यस. Which assessment method allows for assessing a student's understanding through a series of open-ended questions? Essay assessment, multiple choice assessment, true false assessment, matching assessment. को assessment रे आमे पिला को open-ended question साहाଯ୍य रे आमे assess करू. सर open-ended question कहा को कहि आमे ए जो MCQ, true false, matching item, all these three are called as close-ended item. जो क्वेश्चन मानकर गोटे स्पेसिफिक आंसर थाए, गोटे उत्तर थाए, दे आर क्लोज एंडेड. ऐसे टाइप होची ओपन एंडेड क्वेश्चन. सो आंसर इज ऑप्शन ए. चलो. Which assessment approach involves students evaluating the performance or work of their peers? Peer assessment, self assessment, formative, summative. मेंशन है जे peer मेंशन है जे माने संग संग कह दे पेर peer assessment. नहीं peer assessment है work of their peer लिखा है. ए अब बी नुहे. In a group learning, what is one advantage of using collaborative problem solving activities? Group learning रे collaborative problem solving activities use करिवार advantage कौन? It limits the diversity of perspectives. It encourages independent thinking. That it leads to less engagement from students. That it promotes critical thinking, communication and teamwork. जो आम कोलाबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज हो जो समस्त मिसिक करेंगे आ द्वारा पिला भीतर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़िबो, कम्युनिकेशन बढ़िबो, टीम वर्क भी बढ़िबो. बिकॉज ग्रुप वर्क रे टीम वर्क बेसी प्रमोशन हुए. सो आंसर इज ऑप्शन डी. डन. क्वेश्चन नंबर 26. हाउ कैन ए टीचर इफेक्टिवली फैसिलिटेट ग्रुप डिस्कशन टू एनहांस लर्निंग? टीचर केमिति फैसिलिटेट करि परिबो ग्रुप डिस्कशन को जहाद्वारा से लर्निंग को एनहांस करिबो? By always providing the correct answer to guide the discussion, by encouraging active participation and listening and respectful changes of ideas, by discouraging open-ended questions to maintain control, by allowing one dominant voice to dominate the discussion. What will the right answer? Sir, group learning रे सब बेले हमर active participation encourage हुए, listening, रेस्पेक्टफुल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. से गोटे पॉइंट कहे मु गोटे पॉइंट कहे मु ता पॉइंट को ओपिनियन को रेस्पेक्ट दिए. आई कैन एक्सचेंज शेयर सम आइडियाज. यस. लिखा है डोमिनेंट वॉइस, जन गोटे डोमिनेंट वॉइस रहिबो ग्रुप रे. मु जहा कहूसी सेटा ठीक, पूरा बेदर गार किछि तू कहि परिबु नाही, एंद हवा दरकार कि नाही. क्वेश्चन नंबर 27.
What is a key consideration when assigning group project to ensure effective learning outcomes? आम जो ग्रुप प्रोजेक्ट इनकलकेट करछे आ द्वारा लर्निंग आउटकम केमती बढ़ाई परिया पिला मानकर assigning task based solely on teachers performance, providing clear guidance, expectation and individual accountability with the group, providing diverse group composition, ignoring the time frame for completion. ग्रुप प्रोजेक्ट देला हमें कौन कहबा ग्रुप प्रोजेक्ट देला बेले क्लियर गाइडेंस दरकार एक्सपेक्टेशन दरकार इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन दरकार यस ऑप्शन बी बेटर ऑप्शन ओके बी इज द बेटर ऑप्शन when implementing group learning what is an advantage of using cooperative learning activities तुम syllabus रे अछि गोटे पार्ट जे small group learning या group learning when implementing small group learning what is an advantage of using cooperative learning activities small group learning रे cooperative learning activities रो advantage कोन it promotes mutual support interaction and shared responsibility for learning भलो कथा लिखा है they encourage competition negative word it limit the individual participation negative word lead to isolation negative word option A is better done question number 29 in small group learning what role can the teacher play to maximize engagement and learning learner engagement और learning को बढ़ाया पाई teacher कौन role play करि परिबो small group learning रे provide direct instruction to the question without discussion नहीं सीधा सड़क आंसर दे दो रेडी acting as a facilitator भलिया काम करिवो गाइडेंस दबो पिलर प्रोग्रेस को मॉनिटर करिवो बढ़िया ऑप्शन लिखा है बी हबो डिटेक्टिंग ऑल द स्टेप सब स्टेप डाकी दबो कि यू कैन नॉट डिटेक्ट माने मु डाकी देबी तुम लिखि दबो नेगेटिव यू हैव टू अवॉइड कैन यू अवॉइड द इन्वॉल्वमेंट नो क्वेश्चन नंबर 30 what is an effective strategy for managing time during small group activities to ensure productive learning बढ़ाइबा पाई कोटा गोटे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी स्मॉल ग्रुप लर्निंग रे टाइम को मैनेज करिबा setting unrealistic time limits to challenge and group allowing the group to determine their own pace without intervention ignoring time constraint time को ignore करिवो ना providing clear instruction and periodic check-ins to keep group on track. What is the right answer? Answer D. Providing clear instruction दबो मजे मजे period checkup करिया दरकार जोटा को हम कहूँ टीचर एज ए फैसिलिटेटर टाइम लिमिट रहा दरकार टाइम लिमिट न रही तो पिला निज वे करते टाइम पड़ेगा ना ये जो ऑप्शन दे ऑप्शन बी तुम भाव विदाउट पिला किसी तुम मुंड खाया दरकार नहीं से ओन पेस लर्न करते ठीक अच्छे ओन पेस लर्न करिया ठीक अच्छे बट टाइम लिमिट रही पिला गोटे टैक्स दे सर वर्ष पड़ेब यू हैव टू प्रोवाइड देम गाइडेंस दबो ओन पेस ठीक नहीं ओन पेस भल ऑप्शन खराब ऑप्शन नहीं कि टाइम लिमिट रहा दरकार पीरियड मझे मझे पीरियड चेकअप हवा दरकार ग्रुप जो ट्रैक रही टाइम बाहर को न जाए यस when promoting self learning what is the importance of providing variety of resource and materials आम जो सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करुचे आ भर भेराइटी रिसोर्स और मटेरियल यूज करिवार इंपोर्टेंस कौन इट लिमिट्स इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन भेराइटी यूज हेले पिलार एक्सप्लोरेशन लिमिट कौन पे हम बढ़िबो ना इट डिस्करेज सेल्फ नो इट कैटर टू द डाइवर्स स्टाइल ऑफ एंड परफॉर्मेंस ऑब्वियसली पिला मन भीतर जेहेतु इंडिविजुअल डिफरेंस अच्छी विविधता अच्छी विभिन्न छुआंकर अप्रोच अलग अलग से हमको भेराइटी ऑफ रिसोर्स मटेरियल दबा दरकार यस सी इज द बेटर ऑप्शन How can a teacher foster a sense of autonomy and responsibility in self-directed learners? Teacher केमिति foster बढ़ाई परिबो autonomy और responsibility पिला मानक भितर जेंति से सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स हेबे सेल्फ लर्नर हेबे by providing all answers and solutions advanced सब जगह सॉल्यूशन दे देबी अच्छा कोन पढिबे by allowing learners to make choice and set goals and reflect on their progress पिला मानक सुजोग दउ से माने निजर चॉइस निजर गोल निजर प्रैक्टिस निजर प्रोग्रेस ऊपर निजे चिंता करन बड़ा ऑप्शन लिखा है बाय क्लोजली मॉनिटरिंग एवरी स्टेप नो बाय इंपोजिंग रिजिड तो नेगेटिव आंसर बी
What is a key principle in supporting self learning through inquiry based activities? Inquiry based activities रे self learning को support करिवार key principle कौन? Providing all information. किसी प्रश्न नहीं, सब जगह information दे दबो. Encouraging curiosity and questioning and independent exploration. Curiosity, questioning, independent पिला निजे निजे explore कुछ भला option है, खराब option नहीं. Cannot avoid, you cannot limit. Avoid, limit, negative word in pedagogy. Option B is the better option. Coming to the question number 34. How can a teacher create a conducive learning environment for self learning? को तुम आंसर दियो, मु पढो आंसर दियो. How can a teacher create a conducive environment for self learning? Self learning ପାଇଁ गोटे अनुकूल वातावरण गोटे टीचर केमिति तयारी करि परिबो? By providing opportunity for independent exploration, inquiry and reflection. बढ़िया कथा लिखा है. By strictly adhering to strict negative, discourage negative, limit negative. अब जो आंसर ए हो. Yes, very good. Question number 35. What is the primary goal of continuous comprehensive evaluation in education? Ranking the students based on their performance, assessing students at the end of each academic year, evaluating students' holistic development throughout the year, focusing solely on summative assessment. CC रो primary purpose कौन? सर CC माने holistic assessment. CC रो जो word comprehensive शब्द अर्थ ही होची holistic. जो continuous शब्द अर्थ ही होची throughout the year. Continuous term रो meaning ही होची throughout the year. Comprehensive शब्द अर्थ ही होची holistic. So better option answer C. Question number 36. Which assessment is typically conducted during the learning process? During लिखा है. छोटा क्वेश्चन. पढ़ाई जल्दी. ए मझे मझे एमती छोटे छोटे चॉकलेट गोटे क्वेश्चन रहा दरकार. मन टी खुश रहा. सब जगह कष्ट हेनी. सब जगह कष्ट ना. स्टैंडर्ड क्वेश्चन अच्छी. एत सस्ता क्वेश्चन भी नहीं. In formative assessment, what is the primary purpose of providing feedback to the students? Formative assessment रे पिला को feedback दबार primary purpose बा मुख्य उद्देश्य कौन? To assign grade and rank. Sir, grade and rank summative रे हुए. To motivate the students to compete with their peers, to help students to understand their strength and weakness, to maintain strict discipline in the classroom. What is the right answer? Strict discipline negative word. Motivate student, motivate ठीक अच्छी, but competition negative word in pedagogy. Competition is competition बढ़िया नहीं. हमको पिला मानक भितरे cooperation collaboration बढ़िया अच्छी. Competition को मारा बोली. To help students understand their strong strength and weakness, एटा भल option sir. एटा बढ़िया option. Answer C. Which type of assessment is typically conducted at the end? The word लिखा है at the end. सेशन डिजाइन वाला क्वेश्चन हुए गोटे सेशन हुए. एंड लिखा है समेटिव. एंड माने शेष. एस माने शेष. एस माने समेटिव. एस माने शेष. शेष. What is the primary purpose of diagnostic assessment? D for diagnostic, D for difficulty. Assign final grade to the student, to identify learning disabilities in students, to provide feedback on current performance, to assess students' overall development. तुम्हें दियो आंसर किछ नहीं राजेश. Sir, final grade and as it is a part of summative. It was summative part. Identify learning difficulties but difficulties. हाँ. I didn't. हम diagnostic part to provide feedback on current performance. it आपनकर formative. It CC. Yes. So answer is option B. In the context of CC, what does the term comprehensive refers to? CC रे comprehensive रो अर्थ कौन? Assessing only academic skills, evaluating students continuously without any breaks,
evaluating various aspects of a student's development, conducting summative assessment regularly. In the context of CCE, what does the term comprehensive refer to? Comprehensive अर्थ कौन? Assessing only academic skills, evaluating students continuously without any breaks. CCE comprehensive अर्थ ही होची overall, जार अर्थ होची evaluating the students various aspect, by different aspect, by holistic aspect. Yes, so C is the right answer. Question number 41. Which type of assessment is most commonly associated with assigning grade and rank? Formative, diagnostic, summative, continuous. Which type of assessment? कोथरा में grade और rank दो. Sir, grade rank इतने अपन को summative पे दिया जाए. सेसु. Yes. In formative assessment, what is the primary role of the teacher? Formative assessment रे teacher रो primary role कौन? Assigning grade to the student, providing continuous feedback and support, conducting standardized test, preparing students for summative assessment. It is summative. Answer B. Continuous feedback, continuous support दबा दरकार, regular support दबा दरकार. Yes, because formative is continuous, summative is terminal. by end को है, terminal by end को है. What is the key characteristics of continuous assessment in CCE? Continuous assessment जो CCE रे continuous assessment रो key characteristics कौन? Assessing students at the end of the academic year? No. Conducting frequent quizzes and tests, focus solely on academic performance, evaluating progress, students progress throughout the year. Continuous रो अर्थ होची वर्ष सारा. Continuous रो अर्थ कौन? वर्ष सारा. Evaluating the students progress throughout the year. Yes. Which assessment helps to identify gaps in students' knowledge and skill at the beginning of a course? Formative, diagnostic, summative, continuous. Which assessment helps to identify the gap? Student or knowledge रे gap. Gap में पढ़ुची केते तमे पढ़ुचो केते. Teaching learning भितर जते gap रही जाबो तेटा पिलर प्रॉब्लम क्रिएट हो. से प्रॉब्लम टाउ फाइंड आउट कर टीचर कोथरे करे. Diagnostic assessment रे. So answer is option B. What is the primary purpose of assessment of learning in education? Assessment of learning education रे तारा primary purpose कौन? To inform instruction and guide teaching strategy, to provide feedback for students' improvement, to evaluate students' overall development, to assign rank and grade. Assessment of learning देजी. Of learning माने summative. Summative रे हमें सब grade दो, rank दो. Yes. The answer is D. Which type of assessment primarily occurs at the end? At the end लिखा है जी. Summative एटा किस time waste करनी. चलो. सब बड़ा क्वेश्चन कोड में मिसिक थाओ. In AOL, what is the source of data for making judgment about students' achievement? Assessment of learning रे source of data कौन? पिला मानो को judgment दबारा. Student रो self assessment, teacher observation, ना standardized test course, ना assessment result and artifacts. हम summative रे पिला मानो को judgment दो. एतरे source of data कौन? Source of data हो जाए अपन करो assessment रो result और artifacts. खाली test खाली score आधार में दोनों. Result और artifacts. Artifacts बोले पिलर achievement. Artifacts बोले पिलर achievement. Yes. Which of the following characterize the focus of AOL? Assessment of learning ro best characteristics कोड़ा वित्रो. Identify areas of improvement and providing feedback. Encouraging collaborative and peer assessment. Determine the impact of instruction on students' learning. Enhancing the learning experience during instruction. (48) answer कौन होगा? 48 रे आंसर सी हो. आइडेंटिफाई एरिया फॉर इंप्रूवमेंट. फीडबैक दबा एटा फॉर्मेटिव रो पार्ट. एटा भी फॉर्मेटिव रो पार्ट. लर्निंग रो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन दे जे फॉर्मेटिव रो पार्ट. असेसमेंट ऑफ लर्निंग जहाँ को हमें कहूँ समेटिव इवैल्यूएशन. समेटिव इवैल्यूएशन इज अदरवाइज कॉल्ड एज इंपैक्ट इवैल्यूएशन. Summative evaluation is otherwise called as impact evaluation. Summative evaluation is otherwise called as impact evaluation. The answer
C better. In AOL, in assessment of learning, what is the role of teacher in the assessment process? Assessment of learning the teacher role kon assessment process re. Primarily assigning grade and rank, providing continuous feedback and support, conducting standardized test, monitoring students behavior in the classroom. In assessment of learning or summative re, teacher role kon? Teacher role hoji primarily assigning grade or rank दिए. Yes, teacher ही grade और rank assign करे. Yes. Question number 15. What is the primary purpose of AOL for educational institution and policymaker? Assessment of learning or summative ro primary purpose कौन? Educational institution और policymaker पाई. Identify individual students need, improving instructional strategy, accountability and program evaluation, encouraging formative assessment. कौन आंसर दिन? इधर नहीं. इटे accountability और program evaluation. Summative रे assessment of evaluation रे last को हमें accountability देखो overally कितने तमें gain कलो, overally achievement कितने gain कलो, overally objective सब जगह achieve हेला ना नहीं. Yes. तो आंसर इज सी. वेरी गुड. अच्छी आहरी अच्छी सेशन गोटे लाइक करते समस्त पिला माने बुझा गोटे सेशन भल लगुच. व्हाई नॉट 50 रो बी सर 50 रो बी इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी. इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी इम्प्रूव करार सुजोग न था समेटिव रे. पाठपढ़ा सरीगला शेष गला. यस इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी फॉर्मेटिव रे सुजोग था. एसेसन फॉल लर्निंग रे सुजोग था. सेशन गोटे लाइक करदे पे बुझी पार्छ भल लगुच. अच्छी रे सरी ना जाओनी पड़ा अच्छी 50 सैला. डन. यस चलो आपणकर पीजीटी एसएसबी पीजीटी ओपीसी पीजीटी रो एजुकेशन रो कंप्लीट बैच स्टार्ट हो सेकेंड एप्रिल और मु तार सेशन नई पे मैंने ठीक अच्छे समस्ते ठीक है सेशन को जो जे जॉइन करेंगे कोड अप्लाई करेंगे मोर Y594 कोड अप्लाई करेंगे कैन जॉइन द बैच. कोड हूँ Y594. ठीक चल आरंभ करवा. 51 रेडी. Which type of assessment is most closely associated with assigning grade and determining academic achievement? बेटे टिके कम लेवल क्वेश्चन आस सर. ग्रेड कोई अचीवमेंट कोई आम समेटिव देखा. यस इन AOL असेसमेंट क्रिटिकल पेडागोजी क्वेश्चन ना सिलेबस नहीं क्रिटिकल पेडागोजी. इन AOL what role do standardized test typically play? AOL बा assessment of learning रे standardized test रो important role play कौन? previously SSB आगुरु है नहीं. SSB आगुरु के टीचर एग्जाम करनी फर्स्ट टाइम कर. In AOL what role do standardized test typically play? Providing formative feedback to students, assessing students' prior knowledge, evaluating the effectiveness of instruction, ranking students against a national standard. Standardized test सब ranking दिया जाए, comparison आसे. Standardized test always promotes ranking and इधर ranking दिया जाए, gradation दिया जाए. Yes, answer D हो standardized test. Which assessment primarily aims to measure the effectiveness of a instructional program and curriculum? Formative, diagnostic, summative, program evaluation assessment.
which assessment primarily aims to measure the effectiveness of instructional program and curriculum. The effectiveness आमर चेक कर program evaluation assessment. So D हो program evaluation लिखा है पूरा. D नथले आपण समेटिव कहि थांते. D नथले summative कहते बेटर होता ओके व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ AOL फॉर स्टूडेंट्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग रो प्राइमरी फोकस कोन अचीविंग द हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड्स एंगेजिंग इन सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड गोल सेटिंग प्रिपेयरिंग फॉर समेटिव असेसमेंट competing with peers for academic excellence assessment of learning रो प्राइमरी फोकस कोन assessment of learning engaging in self reflection and goal setting achieving the highest possible grades in कहि हेबनी preparing for summative assessment भूल ऑप्शन competition the negative word competition the negative word the answer is option B हो highest possible grade पाई ही करा जाएगी नहीं ना in constructivist perspective रे what is the primary role of the teacher in subject based learning constructive perspective in subject based learning गोटे अच्छे आपन ऑप्शन एतरे टीचर रो प्राइमरी रोल कोन टू फैसिलिटेट स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी टू डिलीवर कंटेंट थ्रू लेक्चर टू असेस एंड रैंक स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम मटेरियल्स constructivist perspective रे what is the primary role of the teacher in subject based learning रे teacher रो primary role कौन जोड़ा आगुआ पूछो फिक्स था yes to facilitate students explanation and discovery the constructive perspective कोई constructive perspective को हमें कहि परिबा एटा child centric perspective student centric perspective learner centric perspective so answer be have better what is the central idea behind subject based learning in constructivism रे subject based learning रो मुख्य आइडिया कौन students should memorize fact and concept learning is an active process of constructing knowledge teachers should detect what students learn assessment is the primary focus of education constructive subject based learning कथा पचाची constructivism रे सर constructivism रे learning टा गोटे active process of constructing knowledge answer B is the better option question number 57 what is the primary role of assessment in a constructivist perspective of subject learning रे primary role कौन to rank students based on performance, to measure teacher effectiveness, and to provide feedback for student reflection and growth. Sir, constructivist perspective रे हमें जो assessment करचे आ द्वारा हमें पिलार feedback ग्रहण करचे पिला को feedback दौचे पिलार growth ऊपर गुरुत्व दौचे yes competition negative word so C better option according to constructivism how do students construct knowledge in subject based learning constructivism अनुसार पिला माने केमिति subject based learning रे knowledge construction करंती by actively engaging with new information and experience by memorizing information provided by the teacher by receiving direct instruction from the expert by competing with peers the negative word answer A is better option A according to constructivism how do students construct knowledge in subject based learning तो मोटे syllabus रे part अछि constructivism perspective of assessment according to constructivism how do students construct knowledge in subject based learning रे पिला माने knowledge construction केमिति करंती standardized testing and grades encouraging passive na developing critical thinking and problem solving skill negative option it C or better yes C better critical thinking or problem solving skill बढ़ाते पिला how does constructivist subject based learning view the role of textbook रो role को constructivist subject based learning केमिति देखे
as the sole source of knowledge, as valuable resource to supplement learning, as irrelevant in learning process, as the primary assessment tool. Textbook is one of the resource. Textbook ta gotte matra resource, text gotte matra कहले भूल हम, is one of the resource. Textbook छड़ा मध्य पिला माने multiple way रे learn करि परंती. Learning from experience, learning from experiment, learning by doing. There are several methods are there. So answer B हवा. It is a valuable resource जोड़ा learning को supplement करे. What is the primary purpose of group activities and discussion in constructivist subject based learning? Constructivist subject based learning रे group learning रो primary purpose to promote competition, negative. Provide opportunity for passive, negative. Foster collaboration and shared understanding by cooperation, positive. Yes. Answer C. 62. In a constructivist perspective, how should teacher respond to student misconception in subject based learning? Subject based learning रे student रो misconception को केमिति teacher respond करिवा दरकार. Correct the misconception and provide right answer. Misconception मु correction कर देबी, right answer दे देबी. पिलर misconception को ignore करिवी ना, encourage students to explore and revise their misconception. भलो कथा पिला को encourage करिवा दरकार. They should explore their misconception, they should revise their own misconception. पिला problem टा निजे जानू, निजे rectify करू, सेटा better option. Punish, negative word. C better option. What does constructivism suggest about the relationship between prior knowledge and new learning in subject based education? Subject based education रे prior knowledge new knowledge भितर constructivism कौन connection दउछ? Prior knowledge is irrelevant in new knowledge. Prior knowledge should be dismissed in favor to new concept. Prior knowledge served as a foundation for new learning. Prior learning invites new learning. What does constructivism suggest about the relationship between prior knowledge and new learning? Prior knowledge foundation दिए learning रो. Yes. Such question, it cost question में. Which assessment tool is best suited for evaluating students' ability to apply knowledge and skill in real world application? Apply knowledge in real world application. कोड़ा दिए. Teacher made test, assignment, observation, multiple choice quizzes. Apply knowledge in real world situation. मु पढ़ी सारा पर पिला जो असाइनमेंट दिए, असाइनमेंट द्वारा ही रियल लाइफ अप्लाई, असाइनमेंट दबार पर्पज ही से जहाँ पढ़ीच तार रियल लाइफ एप्लिकेशन रे ताकू सॉल्व करने चेष्टा करो. यस, सो आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 65. व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रोजेक्ट एज एन असेसमेंट टूल? प्रोजेक्ट को असेसमेंट टूल हिसाब रे यूज करिवार प्राइमरी एडवांटेज कौन? दे आर क्विक एंड इजी टू ग्रेड. दे प्रोवाइड ए होलिस्टिक व्यू ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. दे आर ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड. दे फोकस ऑन रोड मेमोराइजेशन. व्हाट इज द राइट आंसर? तो प्रोजेक्ट देले पिलार होलिस्टिक व्यू ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को हम जानि परिबा. प्रोजेक्ट रे पिलार कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर तीनटा जाक डोमेन को हमें कनेक्ट कर परिबा. यस, when students observations as an assessment tool, what should the observer primarily focus on? When using observation as an assessment tool, हम observation को जितला assessment tool हिसाब रे व्यवहार करूचे, what should the observer primarily focus on? Observer कहा ऊपर गुरुत्व दबा दरकार? Student self assessment, teacher led activities, specific behaviors and skills, written assignment. Observation रू better कौन जानी फे? Observation सब best way to study the behavior of a learner. Observation is the best way to study the behavior of a learner. Yes, specific behavior and skill.
which assessment tool is most suitable for assessing a student's ability to recall fact and concept quickly? Project, teacher made test, assignment, observation. Which assessment tool is most suitable for assessing a student's ability to recall facts and concept quickly? Project, teacher made test, assignment, observation. Test रे recall fact and concept, fact concept मन पकई पकई लेखानी को प्रोजेक्ट तो नुहे, assignment अलग कथा, टेस्ट रे ही तो करा जाए ना. Answer is teacher made test. They recall the fact and concept quickly and then they wrote it down. Yes. What is the main drawback of relying solely on teacher made test for assessment? But देखिए अपन का assessment तो syllabus अनुसार चालू ची पिला बने. Concept of assessment, types of evaluation, subject based learning in a constructive perspective, तापरे assessment of learning, for learning, as learning गला, तापरे अपन करो self assessment, teacher made assessment जोड़ा अच्छी चीज़ चलती. They are time consuming and to administrator. They lack validity and reliability. They do not assess higher order thinking skills. They are not aligned with curriculum objectives. What is the main drawback? Teacher made test रो मुख्य drawback कौन? मुख्य drawback हो they do not assess the higher order thinking skill. Higher order thinking skill पिला assess करे भारी कष्ट होगे. इटा अपन को standardized test रे better हुए. Standardized test रे better हुए. They are not aligned with curriculum objectives so aligned था. Lack of validity and reliability को ले भूल हो. Teacher made test को validity and reliability न था कि भूल हो. It is failed to measure the higher order thinking skill. Higher order thinking skill बेसिक अपन को standardized test रे हम measure कर पारो. Yes. Question number 69. Which assessment technique involves systematically watching and recording student behavior over time? Self-assessment, peer assessment, direct observation, formative assessment. Which assessment technique involves systematically watching and recording student behavior over time? पिलार behavior को देखिबा, observe करिबा, ताको record करि रखिबा. Record करि रखिबा. एटा कार पार्ट. Record रखा है behavior word mention कराया है. It is a direct observation. Observation द्वारा ही पिलार behavior को हमें देखिबा, record करिबा. Yes. Record करने CCTV माध्यम नहीं पड़ी. Question number 70 for you. What is the primary purpose of assigning homework as an assessment tool? Homework को assessment tool हिसाब रे use करिबार primary purpose कौन? To increase students workload, to provide additional practice, to reduce classroom disruptions, to replace in class assessment. Homework रो purpose होची एटा आपन को additional practice दिए. स्कूल ले जा पढ़ होमवर्क आउट बड़ प्रपोज होची होमवर्क इज एक्सटेंड द स्कूल लर्निंग. ये आपन स्कूल लर्निंग को एक्सटेंड करे एटा आपन रियल लाइफ रे अप्लाई करंती. तो आंसर बी इज बेटर ऑप्शन. यस. सीन नंबर 71. Which assessment tool allows students to evaluate their own performance and reflect on their learning? Teacher made test, observation, self assessment, group project. Own assessment, निजे निजे परफॉर्मेंस को निजे असेस करिबा, निजे माने सेल्फ. यस. सी. What type of assignment typically requires students to investigate to a specific topic or present their findings? Group project, multiple choice quiz, oral representation, essay. What type of assignment typically requires students to investigate a specific topic and present their finding? Group project, multiple choice question, multiple choice quiz, oral presentation, essay. Answer हुआ essay. लिखिए specific topic. गोटे specific topic बाबद रे investigate करिया, बहुत सारा point collection करिया, collection करी ताको present करिया, written form रे present करिया. एटा ऐसे ही हबो. project किस में ऐसे ही हबो. Answer. Yes. Which assessment tool is most likely to assess students' ability to follow instruction and complete task independently? Assignment, group project,
teacher made test, observation. Which assessment tool is most likely to assess students ability to follow instruction and complete task independently? What is the right answer? Yes, assignment. Independently कही तुम ग्रुप तो हबनी कदा भी टीचर में टेस्ट लगा ऑब्जर्वेशन लगा असाइनमेंट ही होगा आंसर आंसर असाइनमेंट टीचर में टेस्ट में असाइनमेंट है आंसर व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सेल्फ असेसमेंट इन लर्निंग प्रोसेस सेल्फ असेसमेंट पीयर असेसमेंट तुम गोटे पार्ट अच्छी यस एसे तुम गोटे मन इच्छा लिखि दियो एसे तो गोटे टॉपिक बाद कलेक्शन कर डाटा ना ऐसे तो आम टॉपिक बाबद डाटा कलेक्शन करूँ इनक्वारी करूँ इन्वेस्टिगेट करूँ ऐसे तो मन इच्छा लिखि दियो कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेल्फ असेसमेंट इन लर्निंग प्रोसेस टू रिप्लेस टीचर असेसमेंट टू अवॉइड peer feedback टू एनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट टू रिड्यूस वर्कलोड ऑफ द टीचर्स सर सेल्फ असेसमेंट द्वारा आपंकर सेल्फ रिफ्लेक्शन एबिलिटी बढ़े सेल्फ इंप्रूवमेंट एबिलिटी बढ़े सेल्फ मॉनिटरिंग बढ़े सेल्फ एनालिसिस बढ़े सेल्फ मॉनिटरिंग सेल्फ एनालिसिस इंटरनल मोटिवेशन भी बढ़े yes so answer is C. Question number 75 the self assessment in self assessment what role does the teacher typically play self assessment teacher को role play करे the teacher provides all feedback and evaluations the teacher serves as a mediator in peer assessment the teacher assign grade without student input the teacher has no role in the process ग्रुप लेखा तो इंडिविजुअल मेंशन होता से वार्ड बा पिला निजे करिवो इंडिविजुअल वार्ड मेंशन होता बा क्वेश्चन रे इंडिविजुअल वार्ड मेंशन होता ना आंसर बी टीचर सर्व एज ए मेडिएटर बा फैसिलिटेटर टीचर फैसिलिटेटर भलिया काम होतो टीचर फैसिलिटेटर भलिया काम दबो टीचर इठी सब जगह फीडबैक टीचर काई दबो टीचर फैसिलिटेटर भलिया काम दबो यस What is the primary advantage of peer assessment? Peer assessment ro primary advantage kon? It promotes competition among the peers. It ensures unbiased and diverse feedback. It reduces the need of self assessment. It eliminates the need for teacher evaluation. What is the primary advantage of peer assessment? Peer assessment ro primary advantage kon? Competition तो छाड़ दिया and answer is option B it ensures unbiased and diverse feedback multiple छुआ आछंती variety छुआ आछंती variety छुआ तुमको assess करिवे variety feedback आसीबो different type of feedback आसीबो multiple feedback can be collected yes which assessment method involves students evaluating their own work लिखा है self assessment होबो छोटा क्वेश्चन छाड़ दियो आगु चलो व्हाट इज द पोटेंशियल चैलेंज ऑफ सेल्फ असेसमेंट रो पोटेंशियल चैलेंज कौन इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर टीचर्स स्टूडेंट्स में लैक एक्सपर्टाइज टू इवैल्यूएट देमसेल्व्स एक्यूरेटली इट मे लीड टू एक्सेसिव कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स इट टेंड्स टू बी ओवरली क्रिटिकल एंड हार्श सेल्फ असेसमेंट रो पोटेंशियल चैलेंज कौन हो पारे बेले बेले पिला माने निजु को एक्यूरेटली इवैल्यूएट करि परंदिनी सब पिला माने निजु कोन एक्यूरेटली एप्रोप्रिएटली इवैल्यूएट करि परंदी कि स्टूडेंट में लैक द एक्सपर्टाइज टू इवैल्यूएट देमसेल्व्स एक्यूरेटली बेले बेले ओवर इवैल्यूएट कर दियंती तांका एबिलिटी थरु अधिक इवैल्यूएट कर दियंती बेले बेले अंडर इवैल्यूएट भी करंती मु पारिबिनी मो द्वारा हबनी मु सब पारिबी जोडी से न पारिबे इवैल्यूएशन पई स्टूडेंट माने एक्सपर्ट नहंती एटा बेले प्रॉब्लम हेई पारे दे मे लैक द एक्सपर्टाइज टू इवैल्यूएट देमसेल्व्स एक्यूरेटली यस Question number 79. In peer assessment, what is typically used to guide the evaluation process? Peer assessment typically evaluation process को guide करे क्या? Teacher instruction, standardized test, peer pressure, rubrics of criteria. What is typically used to guide the evaluation process? Typically कोटा use करा जाए evaluation process को guide करिया पे. Evaluation process को सब बड़े guide करे क्या अपन का? Guide करे scoring guide. Guide हमें कहाँ को? Rubrics is a guide which always guide the evaluation process. Now scoring guide कहा जाए evaluation process को guide करे. Yes.
and D. Which assessment method encourages students to take ownership of their learning and reflect their progress? Teacher assessment, self assessment, peer assessment, group assessment. Ownership of their own learning, निज learning को निज ownership नहीं आती है, self assessment part. Yes. What is a potential limitation of peer assessment? Peer assessment रो ଗୋଟେ potential limitation बा drawback कौन है पारे? It relies too heavily on teacher's judgment. Teacher judgment सहित peer assessment रो किसी संपर्क नहीं. Teacher तांगा बातरे सांग तांगा बातरे. It may lead to inflected grade and leniency among the peers. सांग सहित परस्पर सहित lenient ही पियाँ हम मो सांग तो हे जे ताको दे मार्क दे मो सांग ताको कौन कहया मो सहित नने कथा होबनी. It cannot be used for formative assessment. It is not suitable for group judgment. Answer B हम. पिला माने बेला बेला सांग साथी परस्पर lenient ही जानती. सांग साथी परस्पर lenient ही जानती. Yes. What is essential element in ensuring the effectiveness of self assessment and peer assessment? Peer assessment और self assessment रो effectiveness को ensure करिया पे हमें कौन करिवा? Strict teacher supervision, anonymity of the assessor, clear criteria or rubrics, na elimination of self reflection. Clear criteria mention होगा दरकार, clear rubrics mention होगा दरकार. Yes, बोलो कथा. rubrics माने केमती कोन मन कर मु तुमको असेस करी ताको आगु जणा दे तमे ए स्टूडेंट संग साथी जणा दिया है छी तमे ताको एई पॉइंट रे असेस करिवो ए जो पॉइंट रे असेस करिवो ताको एई बेसिस रे असेस करिवो एई पैरामीटर असेस करिवो ए जो पैरामीटर बा बेसिस हमें कहू ताको rubrics बा क्राइटेरिया बोली मेंशन करू. 83 how can peer assessment benefit the assessor? Peer assessment को benefit केमिति करे? It allows them to assign grade and rank. It reduces the workload in the classroom. It promotes critical thinking and evaluation skills. And it eliminates the need of assessment, self assessment. Peer assessment पिला मानक भितरे critical thinking और evaluation skill बढ़ाए. मो सांग को देखी भी सांग को critical analysis करी तार एटा भूल अछि से एठी काई एमते होउची से काई आसाडा जाई चंपिंग ऑन होउची. Yes. What is the first step in the test construction process? Test construction process रो first step कोन तापर क्वेश्चन हमर test construction आछि पिला माने self assessment peer assessment परे. First step of test construction no first step कोन determining the scoring system, selecting the content to be assessed, administering the test, analyzing the result. The first step होची प्लानिंग तो आम कंटेंट सिलेक्शन करना आग कंटेंट सिलेक्शन कर क्वेश्चन बनइब स्कोरिंग सिस्टम टेस्ट कंडक्ट करवा एनालिसिस रिजल्ट ए सब पछ कथा टेस्ट तो एपर्यंत होनी कंटेंट सिलेक्शन आम ब्लूप्रिंट बनाओ कंटेंट ऑब्जेक्टिव आउ टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Which of the following is a principle of effective item construction? गोटे इफेक्टिव टेस्ट आइटम तैयारी करिवार कोडा गोटे प्रिंसिपल अटे इंक्लूडिंग एम्बिगुअस लैंग्वेज इन क्वेश्चंस. क्वेश्चन रे आमे जेते कंफ्यूजिंग लैंग्वेज लगेबा जेमि क्वेश्चन गोटे पकेल गांधीजी केउठार जन्मग्रहण करथिले छुआ लिख देबे गाँ रे घरे हॉस्पिटल रे क्वेश्चन पचार गांधीजी भारत रो केउ शहर रे जन्मग्रहण करथिले गांधीजी केउठार जन्मग्रहण करथिले छुआ लिख देबे गाँ रे. यूजिंग complex vocabulary should not be used. Writing clear and unambiguous questions. Clear question बेसी confusing question लिखिया कथा नुहे भल कथा. Using multiple choice question केवल multiple choice question नहीं सी बेटर ऑप्शन. यस तो ambiguous language यूज करछु. ambiguous language छुआ लिखि दे मतलब हाथी ऊपर प्रबंध लेख पिला हाथी चित्र कर देछि तापर लिखि देछि प्रबंध हाथी चित्र करि परनी पिला हाथी चित्र कर तापर प्रबंध लिखि देछि हाथी विषय रे लेख हाथी ऊपर प्रबंध लेख से लिखि ता हाथी चित्र कर ता ऊपर प्रबंध लेख. What is the primary purpose of pilot test in test construction process? Test construction process रे जो pilot test करा जाए
पायलट टेस्ट बा गोटे ट्राई आउट टेस्ट करा जाए मु क्वेश्चन गोटे मॉक टेस्ट बनाई मॉक टेस्ट केते इफेक्टिव होबा ना नहीं मु किसी सैंपल छुआ को नहीं तांको ऊपर टेस्ट करूची किसी सैंपल छुआ को नहीं कि तांको ऊपर टेस्ट करूची कले कौन हुए तार प्राइमरी पर्पस कौन टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट टेकर टू डिटरमाइन द डिफिकल्ट लेवल ऑफ द टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस पोटेंशियल इश्यूज विथ द टेस्ट ना टू एस्टाब्लिश द पासिंग स्कोर ऑफ द टेस्ट मु जो सैंपल पिला नहीं क्वेश्चन करुच्ची टेस्ट करुच्ची आदर मुझे चेक करी मो क्वेश्चन किसी भूल भाल अच्छी कि किसी प्रोब्लेम अच्छी कि यस इट यूज टू आइडेंटिफाई एंड असेस द पोटेंशियल इश्यू विथ द टेस्ट वेरी गुड which step in test construction involves ensuring that the test measures what it intend to measure item analysis scoring administration validation को स्टेप रे आम चेक करूँ टेस्ट जो उद्देश्य बना है टेस्टा से उद्देश्य को फुलफिल कर पार्छ ना नहीं इवैल्यूएशन करके आम देखू इवैल्यूएशन स्टेज कौन थाए वैलिडिटी चेक करूँ कौन चेक करूँ वैलिडिटी आपण आम जी पायलट टेस्टिंग रे हाँ मुझे पायलट टेस्टिंग एसएसबी टीजीटी सैंपल छुआ ऊपर जो टेस्ट करा जाए क्वेश्चन तैयारी पूर्व सैंपल छुआ नहीं टेस्ट करा जाए क्वेश्चन ठीक ठाक अच्छी ना नहीं भूल भाल अच्छी कि किसी कौन चेक करा किसी चेंज करा टाइम रे सरुची ना नहीं यस व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आइटम एनालिसिस इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन आइटम माने कौन ये भात डालेमा डालेमा काकुड़ी सालाड सालाड यही आइटम माने क्वेश्चन आइटम व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आइटम एनालिसिस इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन तैयारी कला क्वेश्चन को एनालिसिस करिवार मुख्य उद्देश्य कौन डिटरमाइनिंग द टेस्ट रिलायबिलिटी आइडेंटिफाइंग क्वेश्चंस दैट आर टू इजी एंड टू डिफिकल्ट असाइनिंग ग्रेड टू टेस्ट ग्रेड सहित संपर्क नहीं डिटरमाइनिंग टेस्ट वैलिडिटी आइटम एनालिसिस रो प्राइमरी पर्पस कौन आम चेक करूँ क्वेश्चन लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेक करूँ बहुत इजी हो जाए तो बहुत सहज हो जाए बहुत कष्ट हो जाए तो yes to maintain the moderate level yes बुझला done which of the following is a key principle in constructing effective MCQ बनैबारे key principle कौन including as many as answer choice as possible मन 8-10 4टा ऑप्शन 10टा 12टा 13टा 14 ऑप्शन दबो कि मेकिंग आंसर चॉइस ऑफ सिमिलर लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी आंसर सब जगह सिमिलर लेंथ रहा दरकार जो आंसर जी बड़ जो राइट आंसर जी बड़ लेंथ रही छुआ भाई ना अधिक काली खर्च हो ये आंसर हम मार तक एनसोरिंग दैट करेक्ट आंसर अपियर फास्ट इन एवरी क्वेश्चन करेक्ट आंसर सब ऑप्शन ए हम एमती हेनी अवॉइडिंग द यूज ऑफ डिस्ट्रैक्टर यूज करना डिस्ट्रैक्टर यूज एमसीक्यू बना डिस्ट्रैक्टर आम यूज करवा ना एमसीक्यू बना डिस्ट्रैक्टर यूज करवानी अरे एमसीक्यू बना डिस्ट्रैक्टर यूज करा केमती हाँ बी बेटर ऑप्शन आंसर चॉइस गुड़ाक सिमिलर लेंथ सब सिमिलर लेंथ रही थो कॉम्प्लेक्स लेवल भी सब सामान हो गोटा सस्ता हेल्ले तुम जान दौ नेगेटिव गुड़ा पढ़ी पढ़ी बहुत अभ्यास होगा सांगे सांगे आइडेंटिफाई कर दौ ना व्हाट इज ए कॉमन गाइडलाइन फॉर कंस्ट्रक्टिंग एस यहाँ आप कौटे अच्छे कल जो प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन जो प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन सिलेबस अच्छी सिलेबस देखिए सब जगह क्वेश्चन जो 10-10टा गोटे गोटे सिलेबस गोटे गोटे पार्ट अनुसार जाऊँगी आसेसमेंट ठीक अच्छे बुझिपारे गोटे एसे टाइप टेस्ट बनैला कॉमन गाइडलाइन कौन कि क्वेश्चन शॉर्ट एंड कनसाइज जिते शॉर्ट और कनसाइज क्वेश्चन रखियो अवॉइडिंग यूज सब्जेक्ट लैंग्वेज इन क्वेश्चन बेसी सब्जेक्ट लैंग्वेज यूज करियो नहीं प्रोवाइड ए लिमिटेड टाइम फ्रेम फॉर रेफरेंस कम समय दबो ना इंक्लूडिंग as many as ऐसे क्वेश्चन as possible in one test ऐसे क्वेश्चन रे जिते पार्छ सेते ऐसे रखिदबो जिते पार्छ सेते केंद्र ऐसे रखियो क्वेश्चन को जिते शॉर्ट और कनसाइज करो आज के डेट लंबा लंबा 10 मार्किया क्वेश्चन पढ़ू ना वेरी शॉर्ट और कनसाइज क्वेश्चन पड़े क्वेश्चन गोटे ऐसे टाइप बनाला जे भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे गांधीजी को भूमिका वर्णना करो छुआ लिखिए गोटे कोड लिखिदेवे कनसाइज करदे चंपारण आंदोलन में गांधीजी को भूमिका वर्णना कर वेरी कनसाइज क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट और स्पेसिफिक तो आज का डेट रे तुमर आउ 10 मार्किया 15 मार्किया क्वेश्चन पड़नी पूरा 5 मार्किया 4 मार्किया 3 मार्किया वेरी शॉर्ट और कनसाइज क्वेश्चन पड़े जिते क्वेश्चन से शॉर्ट और कनसाइज हम माने आंसर भी स्पेसिफिक हम मार्क भी समान अर्थ रिलायबिलिटी मेंटेन रहिबो इफ द क्वेश्चन इज शॉर्ट एंड कनसाइज इट विल मेंटेन द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट आइटम यस
Which principle of test construction emphasizes the importance of ensuring that a test is fair and unbiased for all test takers? सबू टेस्ट टेकर्स पाई सबू टेस्ट टेकर मान जो फेयर मेंटेन रखापी आम कौन करवा वैलिडिटी रिलायबिलिटी स्टैंडर्डाइजेशन इक्वालिटी emphasizes the importance of ensuring the test is fair and unbiased. The test is fair and unbiased. Concise and critical thinking develop होनी कौन भाई शॉर्ट आंसर डेवलप होनी क्वेश्चन बने मेकर पर डिपेंड करे इक्विटी दरकार वैलिडिटी कहीं कौन इक्विटी कहीं होनी यस हाँ हाउ डज स्टैंडर्डाइजेशन इन्वॉल्व इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन टेस्ट कंस्ट्रक्शन ने स्टैंडर्डाइजेशन आम क्या कहवा अडॉप्टिंग द टेस्ट टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स ना यूजिंग ए consistent administration and scoring procedure for all test takers, creating unique test and randomly selecting test item from question. Standardization ने सब बड़े हुए पिला माने consistent administration and scoring procedure for all test takers. Standardized test करा होची बोर्ड परीक्षा करा होची बोर्ड परीक्षा खाली अल्प छुआ दउना पूरा मैक्सिमम छुआ दउसंती समस्त पई क्वेश्चन रो क्वेश्चन सेम एडमिनिस्ट्रेशन सेम स्कोरिंग प्रोसीजर भी सेम यस Done. In test construction, what is the purpose of setting a passing score of a cutoff point? Test construction रे what is the purpose of setting a passing score or a cutoff point? गोटे passing score बा cutoff point set करिवार purpose कौन? To determine the test validity, to difference between high and low performing students, to establish item difficulty, to guide the selection of the test content. इस इतरा में हाई और लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट को अचीव आइडेंटिफाई कर परिबा कट ऑफ क्राइटेरिया सेति में रखा जाय यस नेक्स्ट कमेंट द क्वेश्चन नंबर 94 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए ब्लूप्रिंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ब्लूप्रिंट रो काम कोन टू शोकेस द प्रोजेक्ट एस्थेटिकनेस टू प्रोवाइड a detailed reconstruction plan to summarize project goal and objective to outline the project budget. Blueprint of project management blueprint of purpose कौन blueprint आपनकर to summarize the project goal objective first में goal और objective को ही set करा जाए blueprint सब बड़े goal और objective ही तैयारी करा जाए yes हाँ goal objective अनुसार planning करा जाए first goal objective first then plan next. In educational assessment, what does a blueprint typically outline? Educational assessment रे blueprint रो काम कौन? The physical layout of assessment center, the distribution of question by content area or skill, the color scheme of assessment material, the assessment grading rubric. नहीं, assessment grading rubric नहीं. Blueprint रे सब वाले distribution of question by content area और skill. Objective based question, knowledge based question, understanding based question. को content रो question पढ़िबो, को बढ़िया question पढ़िबो. In the context of test development, what is the primary role of a blueprint? Test development रे blueprint रो primary role कौन? To determine the test passing score, to outline the format and design of the test, to specify the content and skill to be assessed, to select the appropriate test administration method. In the context of test development, what is the primary role of a blueprint? Blueprint रो primary role कौन? To determine the test passing score, to outline and format and design of a test. हाँ हमें आउटलाइन तैयार कर डिजाइन तैयार कर सहित टू स्पेसिफाई द कंटेंट एंड स्किल टू बी असेस्ड कंटेंट कौन रहिबो स्किल कौन रहिबो एटा हमें कोथरे सेट करू ब्लूप्रिंट रे सेट करू ना इट्स वेरी गुड व्हाट इज ए कॉमन फीचर ऑफ ब्लूप्रिंट यूज्ड इन आर्किटेक्चरल डिजाइन अच्छा आर्किटेक्चरल डिजाइन ने ब्लूप्रिंट रो कॉमन पर्पस कोन पारे डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट artistic rendering of the project, technical specification for material, historical context of the design. इतने में technical specification देखो, analysis question दा रही जाए जोटे छाड़ दियो. What is the aspect of a blueprint in ensuring alignment of assessment items with learning objective?
प्रोजेक्ट टाइमलाइन कलर टाइमलाइन कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन ना प्रोजेक्ट बजेट आपनकर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन रे ऑब्जेक्टिव मेंटेन हो ना नहीं कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन ही मेंशन करा जाए यस इन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन व्हाट डज ए करिकुलम ब्लूप्रिंट टिपिकली इंक्लूड डिटेल लेसन प्लान assessment item bank learning objective and sequencing ना administrative policy and procedures curriculum blueprint typically क्या को include करे learning objectives और sequence objective ही blueprint ର सबटा main उद्देश्य what is the primary focus of a blueprint in the context of software development रे blueprint ର primary focus कौन blueprint ର primary focus हुए use interface design डिजाइन तैयारी करें ब्लूप्रिंट इंटरफेस डिजाइन तैयारी करा जाए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्स्ट नहीं यस ब्लूप्रिंट रो किसी क्वेश्चन थिला अच्छे आउरी क्वेश्चन अच्छे मोर 50 क्वेश्चन आस देयर भलो सेशन बुझी परसन सम पिला माने हमें प्राय तो चेष्टा कर सिलेबस रो प्रति बीट रो क्वेश्चन अच्छे एवरी बीट रो बुझी परसन समझते सेशन को भल लागुची अप्लाई करंदु जन भी अच्छा लाइक जो कर दियो गोटे लाइक पिला से शेयर कर दियो मेक इट 200 आ आधा घंटा खंडा अच्छी मेक इट 200 वाटर ब्रेक हाउ वाटर ब्रेक ठीक है गोटे मिनट वाटर ब्रेक 95/100 प्रियदर्शन वेरी गुड पानी पी दो पानी पी दो अच्छी अच्छी मुझे जाए नहीं थैंक यू सो मच कहीं पढ़े कड़े अच्छी अच्छी मुझे जाए तो आपण मान कहती एसएसबी टीजीटी रो जो पीजीटी रो टीजीटी न पीजीटी रो एजुकेशन बैच 2 एप्रिल स्टार्ट होची जो एजुकेशन कंप्लीट बैच एजुकेशन रो आपण जो 16 जगह यूनिट अछि सब जगह यूनिट मु पढौची जे भी एजुकेशन पीजी पिला अछन जे जॉइन करिपे करंतु ठीक अछि यू कैन जॉइन द क्लास ए मु ए लोकटा मु से लोकटा ओके चलो कोड यूज करिवे Y594 कोड यूज करिवे Y5594 सब जगह इजी क्वेश्चन है किसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सब जगह इजी कहले भूल हो यस ता सहित पिला माने बीड एंट्रांस रो बैच हो ओडिशा गवर्नमेंट बीड एंट्रांस बैच होची 23 मार्च ये आपन संग साथी जे भी संग साथी भाई भौणी जे भी एंट्रांस दउछन बीड एंट्रांस यू कैन शेयर देम ठीक अच्छे सब जगह ये क्वेश्चन नुहे किसी किसी क्वेश्चन तुम भी कन्फ्यूज हो तो सब जिन सब जगह ठीक कर दो ओके फास्ट ओवर ठीक है फास्ट ओवर सेकंड ओवर प्रीवियर एसएसबी रो एग्जाम है नहीं आगुरु एसएसबी टीजीटी फर्स्ट टाइम करछि एसएसबी टीजीटी एग्जाम आगुरु करनी फास्ट ओवर सेकंड ओवर गला बर्तमान में लास्ट ओवर जीवा पावर प्ले जीवा ठीक चल व्हाट डज ए ब्लूप्रिंट इन इवेंट प्लानिंग प्राइमरली स्पेसिफाई व्हाट डज ए ब्लूप्रिंट event planning primarily specify the event marketing strategy, the location and venue details, the event social media presence, the event catering and menu options. Event management blueprint कौन specify करे location और venue details. Normal question assessment वाला question नहीं normal blueprint वाला question. In the context of assessment development, what is the role does cognitive complexity play in blueprint? असेसमेंट प्रोसेस रे
cognitive complexity blueprint रे को प्रकार रोल प्ले करे to determine the blueprint color scheme, it outline the project budgetary constraints, it provide historical concept of the context for the assessment. Hindi lecture Hindi language आसिबो कोन इंग्लिश रे आसिबो. It specifies the distribution of Hindi lecture रे खाली हिंदी पढ़े आ किछ पढ़े items of by cognitive level. Cognitive level अनुसार इति cognitive level अनुसार ही item distribution करा जाए. Yes, it is specify the distribution of the items by cognitive level. Question number 103, what is the potential challenge in the development of a blueprint for a complex project? The blueprint बनाला बेले कौन challenge teacher face करि पारे? Lack of clarity of project goal and objective, overemphasize on aestheticsness, underestimating the project budget, omitting the technical specification. Problem face कौन करि पारे? Lack of clarity of project goal. यदि project goal clarity नहीं, blueprint बनाने में problem face हुए. Which of the following is a key consideration when preparing multiple choice item? जितने multiple choice item बनाऊचे कोटा को हमें गुरुत्व देवा उचित. Making questions as difficult as possible as challenge to the students. Using jargon माने technical language हो, to test domain knowledge. Ensuring that all distractors are equally plausible. Writing clear, concise and unambiguous question. पढ़ाओ. मैं क्लियर अनकनसाइज और अनएम्बिगुअस क्वेश्चन बनाया दरकार ए दिता तो हबो नाही ऑल डिस्ट्रैक्टर आर प्लॉसिबल एटा भलो ऑप्शन खराब ऑप्शन सी रे खराब ऑप्शन नुहे सी रे खराब ऑप्शन नुहे डी भी खराब ऑप्शन नुहे ठीक अछि बुझबा तो राइटिंग क्लियर कनसाइज एंड अनएम्बिगुअस क्वेश्चन एटा बेटर ऑप्शन कंपैरिजन टू सी सी अपेक्षा डी टा बेटर ऑप्शन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ including a distractor in MCQ item. MCQ item रे आपण जो distractor use करसन तार primary purpose कोन to make the correct answer more obvious, to challenge students and encourage critical thinking, to provide a backup answer for students who are unsure, to confuse students and lower test scores. पिला को confuse करके तांको test score कमेबा distractor use कले CD भलो ऑप्शन डी टा बेटर ऑप्शन to challenge students and encourage critical thinking. आम जिते distractor यूज करबा पिलार critical thinking बढ़िबो अंडरस्टैंडिंग बढ़िबो सेटा कंपेयर करिवो कंपेयर करी ता भीतर राइट आंसर बाछिबो. यस क्वेश्चन नंबर 106 when preparing true false item what is a common pitfall to avoid? आम जो true false item बनाउछे बट तो कॉमन pitfall कॉमन असुविधा कौन है पारे? pitfall माने असुविधा pitfall माने कौन असुविधा जहाँ को हमें अवॉइड करिया दरकार. Making statement too complex and lengthy, using ambiguous language in the statement, ensuring that all statements are true, randomly selecting without alignment objective. Ensuring all items are true तो कहबनी selecting randomly select हमें बिना objective को न देखी can we randomly select the question? No. Answer B better. Using ambiguous language आमे स्टेटमेंट रे जते एम्बिगुअस लैंग्वेज लगेबा कॉम्प्लेक्स लेंदी एटा भी गोटे चैलेंज बट एम्बिगुअस लैंग्वेज इफ यू आर यूजिंग एम्बिगुअस लैंग्वेज टा सबुठ खराब ऑप्शन कंफ्यूजिंग लैंग्वेज दरकार नाही एम्बिग्यूटी इज ए नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ टेस्ट. यस एटा ए चाहि बी टा आही खराब ऑप्शन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज चलिबो लेंदी चलिबो स्टेटमेंट लेंदी चलिबो बट ए अपेक्षा बी बहुत खराब ऑप्शन. ट्रू फॉल्स आइटम लेंदी स्टेटमेंट कैन बी एडमिसिबल. व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंक्लूडिंग ओपन एंडेड एंड एसे क्वेश्चंस इन एन असेसमेंट? गोटे असेसमेंट रे ओपन एंडेड और एसे टाइप क्वेश्चन रखिबार प्राइमरी गोल कोन? टू सेव टाइम ड्यूरिंग रीडिंग, टू असेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिकॉल फैक्ट्स, to measure higher order thinking and communication skill, to eliminate the need for objective questions. What is the primary goal of including open ended or essay question?
ओपन ऐसे क्वेश्चन रखिले पिलार हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बढ़े, कम्युनिकेशन एबिलिटी बढ़े, एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन एबिलिटी बढ़े। यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल कंस्ट्रक्टेड फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन। गोटे भल फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन हो पारे? ensuring that there is only one possible correct answer, using obscure vocabulary and technical term, obscure means unnecessary vocabulary, providing a word blank to add students, allowing for multiple correct answers। गोटे well constructed fill in the blank question रो भल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन? फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आंसर करें तो गोटे पॉसिबल करेक्ट आंसर हम। मल्टीपल करेक्ट आंसर केमती हो? मल्टीपल करेक्ट आंसर हेले तो एटा क्वेश्चन मार्किंग भारी करिवो ना, ओपन रही गला ये जहाँ फल आपनकर टेस्ट रो रिलायबिलिटी कमिवो। यस, व्हेन क्रिएटिंग मैचिंग आइटम्स इन ए टेस्ट व्हाट इज इंपोर्टेंट टू कंसीडर? आम मैचिंग आइटम बनला बेले को जिनस को गुरुत्व देवा दरकार। having an equal number of items in both columns, जो कॉलम ए अच्छी कॉलम बी अच्छी एपटे इक्वल आइटम एपटे से चारटा एपटे चारटा नहीं मैचिंग आइटम बनला बेले एपटे से चारटा एपटे पांचटा रखा जाए बोली कुआ जाए। आको हमें को प्रेमाइसेस, आको हमें को रेस्पॉन्सेस, इट इज कॉल्ड प्रेमाइसेस, एपटे को हमें कौन को रेस्पॉन्सेस। मेकिंग द मैचेस इंटेंशनली चैलेंजिंग टू टेस्ट मेमोरी, ensuring that in one column do not relate to the item of other, providing clear instruction and avoid misleading pairings। आम सब क्लीयर इंस्ट्रक्शन दबा दरकार, मैचिंग आइटम में क्लीयर इंस्ट्रक्शन दरकार, मिसलीड करिया को पिला मानकू होनी आ क्लीयर इंस्ट्रक्शन भी दबा दरकार। 108 सी ऑप्शन कौन? प्रोवाइड ए वर्ड बैंक टू एड स्टूडेंट। वर्ड बैंक आम एमसीक्यू आइटम जो फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन देऊ, वर्ड बैंक पिला मानकू एमसीक्यू आइटम दिए जो पिला खोजिकी करती, वर्ड बैंक आम कहीं दबा ए क्वेश्चन नंबर 110 फॉर यू। व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज फॉर कंस्ट्रक्टिंग परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट टास्क? परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट टास्क कंस्ट्रक्ट करिवार प्राइमरी चैलेंज कौन? दे रिक्वायर लेस टाइम एंड एफर्ट टू डेवलप, दे आर लिमिटेड इन देयर एबिलिटी टू असेस कॉम्प्लेक्स स्किल्स, दे ऑफन लैक ऑब्जेक्टिविटी इन ग्रेडिंग, दे रिलाई हेवीली ऑन एमसीक्यू। परफॉर्मेंस बेस्ड टैक्स जो प्रैक्टिकल टैक्स रे दे ऑफन लैक ऑब्जेक्टिविटी इन ग्रेडिंग। परफॉर्मेंस टैक्स दे एमसीक्यू कथा नहीं, परफॉर्मेंस टैक्स माने प्रैक्टिकल टेस्ट दे ऑफन में लैक इन ऑब्जेक्टिविटी, लिमिटेड टू देयर एबिलिटी ना, लिमिटेड कहि परियोनी। परफॉर्मेंस टेस्ट में मल्टीपल एबिलिटी अप्लाई करि परियो, लिमिटेड केमथि हो? दे रिक्वायर लेस टाइम ना, अधिक टाइम दरकार, लेस टाइम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए रुब्रिक इन द प्रिपरेशन ऑफ असेसमेंट आइटम? असेसमेंट आइटम बनेला बेले रुब्रिक रो पर्पस कोन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रुब्रिक इन द प्रिपरेशन ऑफ असेसमेंट आइटम? टू लिस्ट पोटेंशियल डिस्ट्रैक्टर्स ऑफ एमसीक्यू, टू प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर स्कोरिंग। हाँ, रुब्रिक्स हमको स्कोरिंग रे गाइडलाइन दिए, से को स्कोरिंग गाइड बोली हमें कहो। यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गाइडलाइन फॉर प्रिपेयरिंग इफेक्टिव ट्रू फॉल्स आइटम? ट्रू फॉल्स आइटम बनेला बेले आम को गाइडलाइन फॉलो करिया दरकार? यूज ए बैलेंस नंबर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, अवॉइड यूजिंग नेगेटिव नॉट स्टेटमेंट नॉट लगांतु नहीं, मेक ऑल स्टेटमेंट मॉडरेटली चैलेंजिंग टू मेंटेन स्टूडेंट एंगेजमेंट, स्टूडेंट गोटे ऑप्शन अच्छे, कीप स्टेटमेंट लेंदी टू प्रोवाइड मोर कॉन्टेक्स्ट, बेसी लेंदी करो। ट्रू फॉल्स आइटम बनेला बेले ये कदा भी नॉट वाला स्टेटमेंट जिते चेष्टा कर मन रखी था। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ए ट्रू फॉल्स आइटम डू नॉट यूज नेगेटिव स्टेटमेंट, बेसी नेगेटिव स्टेटमेंट यूज करूँ नहीं, डू नॉट यूज नेगेटिव स्टेटमेंट, डू नॉट यूज नेगेटिव स्टेटमेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रू फॉल्स आइटम। यस, एटा सब बड़ स्टेप्स ट्रू फॉल्स आइटम कंस्ट्रक्शन सब बड़ स्टेप। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए पायलट टेस्ट? पायलट टेस्ट जो कह सैंपल टेस्ट क्वेश्चन बनवा पूर्व किसी सैंपल छुआ नहीं जो टेस्ट करुचे। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए पायलट टेस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम?
टेस्ट आइटम प्रिपरेशन रे पायलट टेस्ट रो प्राइमरी पर्पस कौन टू डिटरमाइन द पासिंग स्कोर ऑफ द टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस पोटेंशियल इश्यूज with the items to assess the content knowledge of the test developers to evaluate the test difficulty level. And pilot testing रे हमें देखो आइडेंटिफाई करूँ एड्रेस करूँ जे मो जो क्वेश्चन बने क्वेश्चन में किसी किसी इश्यू अच्छी कि दैट इश्यू कैन बी एड्रेस एंड दैट इश्यू कैन बी सॉल्व. व्हाट इज ए डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट? गोटे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रो डिस्टिंग्विशिंग फीचर कौन? They are developed by individual teachers. They vary in format and content from every year to year. They provide a consistent and uniform assessment for all test takers. हाँ, सबू टेस्ट टेकर मान यूनिफॉर्म. यस, स्टैंडर्डाइज बोर्ड परीक्षा समस्त यूनिफॉर्म, किसी चेंज करेनि. टीचर में टेस्ट वेरी करे गोटे क्लास टू क्लास, स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूनिफॉर्म फॉर ऑल. What is the primary purpose of standardized test in education? To evaluate teachers' performance, to assess specific classroom activities, and to provide a common measure of student achievement. Common measure is better option. In standardized test, what is the role of individual teachers in test development? Standardized test development रे individual teacher रो role कौन? Teachers have complete control over the test content. Teacher select a bank of standardized items. Teacher create unique test for each student. प्रति पिला पे unique test बनाए. Teacher do not play any role. कहीं होने. What is the role of individual teachers? अच्छा, individual teacher रो standardized test actually बना दिखे. Standardized test is being made by the expert, by board. Standardized test is being made by the expert or board. It is being made by the expert on board. जेहेतु बोर्ड बनाए, बोर्ड रे इंडिविजुअल टीचर मानक किसी भूमिका न थाए. यस, टीचर मेड टेस्ट कैन बी मेड बाय द इंडिविजुअल टीचर. टीचर मेड टेस्ट कैन बी मेड बाय द इंडिविजुअल टीचर, but standardized test can be made by the expert. What is the common limitation of standardized test? What is standardized test रो common limitation कौन? They lack reliability and validity. They do not measure higher order thinking skills. They are biased against certain students group. They require extensive time and effort for administration. Overall negative कहियो. They are biased. Standardized test को biased कहा जाए. Standardized test is somehow biased. Standardized test is somehow biased. Yes. Which assessment method allows teacher to tailor questions to their specific curriculum and classroom objectives? Teacher निजे बनाती, इधर teacher made test. Teacher निजे बनाते हैं कौन को? Teacher made test को. What is the primary advantage of teacher made test? Teacher made test रो primary advantage कौन? They are administered under standardized condition. They provide a common measure of student achievement. They can be customized to assess specific learning objectives. टीचर मेड टेस्ट को टीचर कस्टमाइज करि पारे. टीचर निज अनुसार चेंज करि पारे. टीचर निज अनुसार चेंज करि पारे. यस. Which assessment method typically emphasizes assessing higher order thinking skill and application of knowledge? Higher order thinking skill और application knowledge रे को assessment technique हमें apply करूँ. इसे अपन को performance based assessment apply करा जाए. Performance based assessment रे higher order thinking skill और performance अर्थ होची real life based assessment बा को हम authentic assessment कहबा. तमे जहाँ पढ़ी तो apply करिया दरकार. What role does the local context and curriculum play in the development of teacher made test? Teacher made test रे local context और curriculum रो role कौन? It guide the selection of test content and format. It has no influence on test content. It determines the passing score of the test. It replaces standardized test content. Local content रे हमें curriculum select test content selection करूँ, test format selection करूँ. Teacher made test जेहेतु local हुए, teacher ही teacher content selection करे, test format teacher ही selection करे, कौन बड़ा question रहे teacher ही selection करे. In teacher made test, what is the primary focus when selecting assessment item? अपन question बनाना बेले teacher made test रे हमें कौन primary focus थाए?
consistent with the national standard सहित टीचर टेस्ट किसी संपर्क ना अलाइनमेंट विथ लोकल करिकुलम ऑब्जेक्टिव एटा लोकल करिकुलम ऑब्जेक्टिव बेस होइतो दरकार बढ़िया कथा एटे आंसर बी तो सिलेबस रे अछि गोटे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट यस व्हाट इज द पोटेंशियल चैलेंज ऑफ टीचर मेड टेस्ट पोटेंशियल चैलेंज कौन दे लैक ऑब्जेक्टिविटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन they are more expensive to administer than standardized test that they do not provide a fair measure of students achievement or they are not suitable for assessing higher order thinking skill what our answer is option A they lack objectivity and objectivity और standardization अभाव था टीचर मेड टेस्ट रे समस्त ପାଇଁ समान न था टीचर मेड टेस्ट इज नॉट ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल टीचर मेड टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव एक क्लास रो टीचर आरो क्लास रो टीचर आरो क्लास रो टीचर मेड टेस्ट करी मु जो वे करी तांकर वे डिफरेंट टीचर मेड टेस्ट इज सब्जेक्टिव टीचर मेड टेस्ट इज नॉट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव माने परसेंट टू परसेंट वेरी करे टीचर मेड टेस्ट कैन वेरी फ्रॉम टीचर टू टीचर फ्रॉम क्लास टू क्लास बट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज सेम फॉर ऑल what term describes an educational approach that acknowledges and accommodates the diverse learning styles abilities and need of all students including those with disabilities को टर्म हम यूज करूँ को एजुकेशनल अप्रोच जोटी एक्नोलेज करे अकोमोडेट करे डाइवर्स लर्निंग स्टाइल को डिफरेंट एबिलिटी लर्नर को डिफरेंट स्टूडेंट नीड को कंसर्न करता को कौन कहवा डिफरेन्सिएसन ही कह अदरवाइज आम इनक्लूजन कहीपर अदरवाइज डिफरेन्सिएसन भी कहीपर इनक्लूजन और डिफरेन्सिएसन सेग्रीगेशन स्पेशलाइजेशन तो नुहे इज कॉल्ड एज differentiation or inclusion variety yes which theory of learning emphasizes the importance of self directed learning and individual exploration self-directed learning और individual exploration उपरे को theory of learning गुरुत्व देछि constructivism behaviorism cognitivism humanism individual exploration individual explore करिवो कोथरे constructivism रे कोथरे हो constructivism रे हो yes self word देखि humanism कहि दियोनी self word देखि humanism कहि दियोनी individual exploration को आइछि निजे निजे एक्सप्लोर करिवो constructivism रे हुए what is the key focus of universal design for learning UDL when designing instruction universal design for learning रो key feature कोन adopting instruction for gifted learners na creating learning environment accessible to all students regardless their abilities and disabilities सब पिला मन पई learning atmosphere create करिवा yes according to Vygotsky socio-cultural theory what role does the social interaction in the learning process Vygotsky को socio-cultural theory अनुसार social interaction no learning process रे role कोन it is irrelevant to the learning process it is primary driver of cognitive development and learning it affects the learning process it learner से disability दरकार नहीं एटा प्राइमरी फोर्स एटा गोटे प्राइमरी ड्राइवर सोशल इंटरेक्शन द्वारा ही पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लर्निंग हुए एटा Vygotsky कहछन what term describes educational strategy that involves providing additional support and adjustment to help learner with disabilities succeed in regular education को term हमें कहबा what term describe an educational strategy that involves providing additional support पिला को additional support दिया जाए जेमिन से एडजस्ट करि परिबो अन्य मानक लर्नर सहित नॉर्मल स्कूल ले डिसेबल पिला माने ताको हम कोन कहि परिबे एडिशनल सपोर्ट accommodation it is called as what accommodation answer A which type of intelligence as proposed by Howard Gardner focuses on an individual ability to understand and interact effectively with others अन्य मानक सहित इंटरैक्ट करन जोडा अन्य मानक सहित इंटरैक्ट करबाटा इंटरपर्सनल पार्ट छाड़ दे एटा क्वेश्चन रे इंटेलिजेंस बसे जेटा पसे कथा नु according to Maslow hierarchy of needs which need must be met first for optimal learning to occur को नीड प्रथमे मेट फुलफिल हवा दरकार लर्निंग पाई according to Maslow
सेफ्टी और सिक्योरिटी फास्ट इट इज फिजिकल नीड्स फिजिकल नीड्स लिखाई था फिजिकल पर तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ना तापर लव एंड बिलोंगिंगनेस से ऑर्डर देखले सेफ्टी और सिक्योरिटी सेकंड ऑर्डर रहिबो यस वन होची इंट्रा अदर होची इंटर ठीक अछि व्हाट इज द टर्म फॉर ए लर्निंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टीज इन रीडिंग एक्यूरेटली एंड फ्लुएंटली एक्यूरेटली पढ़ी पारंदिन से लर्निंग डिसेबिलिटीज ता कोन कहा जाय डिस्कैलकुलिया डिस्ग्राफिया डिस्लेक्सिया एडीएचडी को टर्म यूज करा जाय लर्निंग डिसेबिलिटीज रो व्हिच टर्म इज यूज्ड द टर्म dyslexia is used yes what term describe the process of evaluating a student's strength needs and learning preference in order to tailor instructions पिलार स्ट्रेंथ नीड लर्निंग प्रेफरेंस को आमे देखू से अनुसार आमे पाठ पढ़ार बागाऊ को टर्म बोली कह जाए इंडिविजुअलाइजेशन जदि पिला मानक अनुसार तुम निजक बागाऊछ ताको इंडिविजुअल लर्निंग बा आईईपी बोली कह जाए ना आईईपी एंड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान एटा इनक्लूसिव एजुकेशन सब गोटे इंपोर्टेंट अंश इनक्लूसिव एजुकेशन एटा सब गोटे इंपोर्टेंट पार्ट यस व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी is responsible for temporarily holding and manipulating information in one's mind sensory memory short term memory long term memory working memory which type of memory is responsible for temporarily holding and manipulating information in one mind that is short term memory temporary रहिबा short term memory capacity होची 25 to 30 सेकंड आ तार capacity भी होची it can remember 5 plus or minus 2 number of bit or chunk मानकर मुझे लिखुची लिखली मानकर 7 9 7 8 9 6 9 1 6 4 एटा गोटे बीट 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 ओवरऑल इठी 10टा बीट और 10टा चंक अछि एट अ टाइम 7टा मैक्सिमम कि 3टा एति के बीट और चंक हम मन रखि परबो इट ओवरऑल 10टा बीट और 10टा चंक अछि ना 10टा बीट और 10टा चंक अच्छी वन कैन रिमेम्बर दिस टाइम ठीक अच्छे आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी कह जाए डन क्या नंबर चलो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट को स्टेप एडोलसेंस रे आपनकर आइडेंटिटी रोल कन्फ्यूजन हुए क्वेश्चन रही जाए दरकार नहीं क्वेश्चन रखी था एडोलसेंस रे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन ही आसे So, what term describes the ability of an individual to understand and manage their own emotion as well as understand influence in the emotion of others? कोठे हमें निजो इमोशन को निजे कंट्रोल करू निजो इमोशन को निजे कंट्रोल करू निजो इमोशन को निजे कंट्रोल करू जोड़ा ताको इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन बोली कहा जाए यस व्हिच एजुकेशनल अप्रोच emphasizes experiential learning problem solving critical thinking rather than rote memorization Montessori method traditional education direct instruction behaviorism को एजुकेशनल प्लानिंग रे आपन हेल्प करे था Montessori plan आउ किछ नै नै एसो नेगेटिव वर्ड Montessori plan टा बेटर Maria Montessori is the developer of Montessori plan according to the trial and error theory of learning which of the following best describe the learning process ट्रायल एंड एरर थ्योरी अनुसार कोटा लर्निंग प्रोसेस को बेस्ट डिस्क्राइब करूची लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग रैंडम अटेम्प्ट्स until a successful response is achieved learning is primarily driven by reinforcement and punishment learning is cognitive process focused on problem solving सर ऑब्जर्वेशन कथा तो अल्प बंधुरा कहते कॉग्निटिव प्रोसेस पियाजेट कहते एटा लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग रैंडम अटेम्प्ट आम अटेम्प्ट कर फाइनल केते सक्सेस पाइ जिवो बाज जिवो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी व्हिच फैक्टर इज क्रिटिकल फॉर सक्सेसफुल लर्निंग इनसाइट इमिटेशन रिइंफोर्समेंट परसिस्टेंस ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी कोटा बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी बेसी गुरुत्व देछि आपनकर परसिस्टेंस बा कंटिन्यूटी ऊपर ट्राई करछो बाय चांस बाजी जिवो रिइंफोर्समेंट नो परसिस्टेंस बा कंटिन्यूटी you are trying you will definitely succeed which psychologist is most closely associated with trial and learning theory na kan chotia question na Edward Lee Thorndike
According to Thorndike, what is the law of effect? Law of effect ro mane kon? Thorndike law of effect ro mane kon? Behaviors that are followed by positive consequence are more likely to be repeated, while behaviors followed by negative consequence are less likely to be repeated. Effect mane प्रभाव. तू गलु गोटे झील को पर्पज कलु से झापटा देला आउ ता पछर जीव नहीं तू पर्पज कलु से हसी देला नेक्स्ट टाइम तो पछर जीव ना कौन से काम करिवार जदि इंपैक्ट पॉजिटिव आमे से कामटा रिपीट करबा जदि इंपैक्ट नेगेटिव आमे से कामटा करबा नहीं तो ए आंसर which of the following scenarios best example of exemplifies trial and error theory आइदर कोटा ट्रायल एंड एरर थ्योरी को बेस्ट एग्जांपल करछि एग्जांपलीफाई करछि बा एग्जांपल हबो तार a student successfully involves complex math problem after trying different approach बोला कथा learner say hello after hearing it spoken by their parent एटा होछि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एटा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एटा अल्बर्ट बंद्रा का थ्योरी a pigeon learns to pick a button to receive a food reward through a series of carefully timed reinforcement एटा ऑपरेंट कंडीशनिंग डॉग सैलिवेट एटा क्लासिकल कंडीशनिंग एटा क्लासिकल कंडीशनिंग एग्जांपल आंसर ए हबो यस मैथमेटिकल प्रॉब्लम ट्राई कर हे गेलो अकॉर्डिंग टू इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स माने कोन जो मेंटोस एडवर्टाइज सडन दिमाग की बत्ती जला सडन दिमाग की बत्ती जला इट इज मार्क्ड बाय सडन एंड मीनिंगफुल एंड ऑफन नोवेल रियलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस then insightful learning को हमें aha moment बोली कहो yes eureka moment which psychologist is closely associated with the insightful learning theory sir insightful learning theory देइथिले किए जो गेस्टर्ड वाला वुल्फ गैंग कोहलर yes see is the right answer the wolf gang Kohler's experiment with chimpanzee what is a key example of insightful learning the chimpanzee gradually learned to solve a puzzle through trial and error जमा नुहे ट्रायल एंड एरर सहित इनसाइटफुल संपर्क किछ नहीं the chimpanzee immediately realized how to use a stick to use the banana chimpanzee थिला ताना सुल्तान ता मुंड ऊपर बनाना थिला से केम जानला संग संग माइंड करला बाटे तो बनाना बाड़े फस जीव ना बाटे धरिक बनाना बाड़े देला ठीक अछि अल्प क्वेश्चन अछि पिला टिके आउ टिके लास्ट लिटी शेयर कर दियो जे जना आंसर बी which is the best describe the process of insightful learning where a solution suddenly comes to mind from apparent inactive and unproductive thought अखड़ा मखड़ा रु माइंड को जते सडन सॉल्यूशन पळे आसे त कोन कहजे टर्म इनक्यूबेशन कंडीशनिंग रिइंफोर्समेंट हैबिचुएशन कंडीशनिंग रिइंफोर्समेंट कदा भी नहीं इट इज कॉल्ड एज इनक्यूबेशन मन रखता ताको इनक्यूबेशन कहजे इनक्यूबेशन माने हठात माइंड को सॉल्यूशन पळे आसे यस बुझला What distinguish between insightful learning और rote memorization भितर conditioning भितर फरक कौन insightful learning involves a process of sudden understanding or realization while rote memorization repetition insightful learning sudden realization understanding पर गुरुत्व दिए ये rote memorization ता repetition पर गुरुत्व दिए ठीक कथा लिखा है insightful learning reinforcement ना insightful learning imitation ना insightful learning realize gradually on accumulating knowledge over time ना सडन आसे आंसर यही हबो डन in classical conditioning which with term refers to neutral stimulus that when paired with an unconditional stimulus comes to evoke conditional response को term use करा है that is कंडीशनल स्टिमुलस लिखा है देखो क्लासिकल कंडीशनिंग रे को टर्म यूज करा जाय छी न्यूट्रल स्टिमुलस पई जो आकू हमें अनकंडीशनल स्टिमुलस सहित पेयर करछे कंडीशनल रेस्पॉन्स पाए पई जेमती बेल को हमें फूड सहित मिसौछे सैलिवेशन पाए पई इति जो बेल टा को कोन कहा जाय क्वेश्चन पचासी बेल टा को कोन कहा जाय बेल टा को कंडीशनल स्टिमुलस ही कहा जाय व्हाट डज द बेल इज कॉल्ड Bell is called as conditional stimulus. According to classical conditioning, what is the relationship between conditioned stimulus and unconditional stimulus with the relationship? They are naturally and biologically associated. They must be complete unrelated and for conditioning to occur.
they must be presented simultaneously. The CS predict the occurrence of UCS. They must be completely unrelated for conditioning to occur. जमती बेल आउ फूड डी नुहे बेल आउ फूड की संपर्क ही नहीं बेल इज नॉट रिलेटेड टू फूड बट सैलिवेशन करुची यस व्हाट टर्म डिस्क्राइब द वीकनेस और डिसअपियरेंस ऑफ कंडीशनल स्टिमुलस जदि आपण कंडीशनल बेल बाड़े खाया देलेनी धीरे 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 रेस्पॉन्स करनी जो रेस्पॉन्स कमी जाए ताको हमें कौन कौ टर्म यूज कर व्हिच टर्म इज यूज्ड that is called as extinction that is called as what extinction yes discrimination no भूल अच्छे extinction को धीरे धीरे जो कंडीशनिंग कमी जाए हाँ रेस्पॉन्स कमी जाए एक्सटेंशन को इन पावलोव एक्सपेरिमेंट रे अनकंडीशनल स्टिमुलस किए अनकंडीशनल स्टिमुलस होची फूड ए ओएसटी वाला आंसर लिखते कौन लिखते गोटे अनकंडीशनल स्टिमुलस भूल लिखते ओके डन सेशन गोटे लाइक कर दियो पे कौ जाऊ एसएसबी पीजीटी बैच चलती एजुकेशन Y594 कोड दिए अप्लाई करेंगे मुझे पढ़ाऊँ ता सहित बीएड एंट्रांस बैच जी भी आम सांगसाथी अच्छा कहे जॉइन होगापी यस लास्टली नाइटली आप गोटे छोटिया थॉट दे एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक फिजिकली इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली रिजेक्ट इट एज पॉइजन ताको पॉइजन भाया भावतु यस सो थैंक यू सो मच पे फाइनाली आपण मानू वेरी वेरी गुड नाइट समस्ते सेशन केम लगला भल लगे खराब लगला कमेंट कर निहाती जनइबे देखा काली मॉर्निंग रे मॉक टेस्ट नंबर 18 सहित से पर्यंत समस्त को गुड नाइट नमस्कार एंड थैंक यू एपर्यंत मो सहित रहिले थैंक यू सो मच समस्ते टिके सेशन को गोटे लाइक एंड शेयर करदे आउ कमेंट कर जनइबे निहाती भाव क्वेश्चन केमती लगला थैंक यू सो मच गुड नाइट ऑल टाटा टाटा।